Now the program is streaming live on the YouTube channel of NFFWI. My dear friends, welcome to the session, educational session by National Federation of Insurance Field Workers of India. Let me start with the screen share for the evening. The screen share looks something like this. It's English session we are going to have right now at 7, and we're again going to have a Hindi session at 8:30. So this session is going to be of around 1 hour, 10 minutes, 70 minutes exactly, and the main session would be 50. There was a technical issue out there. The live was audible to me, so it was creating disturbance. I muted that, something I did not know. So my dear friends, can we start the program? If we can start the program, just show me a thumbs up, please. Yeah, we have Prasad Poddar. I would like to, unmute Prasad Poddar. He is a National Federation official that I can see from Kolhapur. Once upon a time, he was the divisional secretary also. So if you can just, Prasad, if you can unmute yourself and officially welcome all the participants. Prasad Poddar, can you unmute yourself? So once again, let me start officially. So great evening, everybody. Welcome to this session. So training by me, Rajesh Tagore, and a big thanks to NFFWI leadership team. So Vinay Babu, the All India President, and Mr. Vivek Singh, the Secretary General. I thank both of them for taking this initiative to invite me for this beautiful program, the introduction to advisor recruitment training. So that's the program. So welcome to Agent Recruitment Training Program, or the introduction to the Agent Recruitment Training Program. So I have just unmuted everybody so that there is no noise disturbance to all of us. Whenever you feel like asking any question, you can raise your hands. I would immediately come to know on the reaction, and I'm going to unmute you and you can ask me questions. And if you are watching me on YouTube, you can also write your questions, and before the end of the program, I would try to answer that question out there. So welcome to this program once again. This is what Mr. M.R. Kumar said. You can't grow without recruiting continuously. Mr. M.R. Kumar was one of the most successful chairmen of LIC, recently retired. Mr. D.K. Malhotra, another very, very successful chairman of LIC, he said, new agents are the foundation of your organization, right? And Mr. Nilesh Sathe, he said, recruitment is our primary responsibilities. And I have been witness to many programs by many divisions, many zones. Several times I was invited as a speaker to speak in front of the development officers, SBS, PDOs, etc. And I was on the dais, and sometimes the zonal manager, sometimes the marketing manager, sometimes the senior divisional manager, sometimes the regional manager, whoever it is, they always said one important thing to all the development officers, and that is the only secret to your success as a development officer is recruitment, recruitment, recruitment. 3 secrets of success. Recruitment, recruitment, recruitment. Yes, everyone talks about recruitment. Everyone says recruitment is important. Everyone says without recruitment, you cannot live. Everyone says recruitment is the most important responsibility we have. And if we have to grow, we have to recruit. We all know that. Recruitment is extremely important. That is not something very, very unknown fact to us. The problem is no one tells us how to recruit. No one tells us whom to recruit. No one tells us where to recruit. No one tells us what to follow, what to tell, what to show, how to recruit, So this is a challenge that development officers are facing.
If you all agree to what I'm saying, you can just show me a thumbs up, please. Thank you so much. So that gives us a confirmation that you can all hear me. Subbarao Garu, if you can hear me and see me, yes, thank you so much. So many people I can see here. Now coming back into the program today, again sharing the screen with you. So welcome again. DO channel is a lifeline for LIC. It is showing tremendous promise. More and more people are becoming successful in the development of this channel now. The organization cannot afford to lose the development officers. If you are a performer, this is exactly what you can see. The chairmans get retired, the marketing managers get retired, EDs get retired, managing directors get retired, but one cadre, the LIC is not in a position to allow them to retire, is the development officers cadre. So the development officers, after retirement, they become the LICA, LICA, right? And they have extended initially for 5 years, and they have again extended it for 5 more years. So at least after retirement also, all of you, all of the super performing development officers, SBS, PDOs, can continue their life for at least 10 more years. And by the time they complete 10 years, I'm very, very sure that the corporation is going to extend it by 10 more years, which means the corporation feels that the development officers are extremely important. So today, as far as recruitment is concerned, that is the subject today. I'm going to speak about 3 development officers, the story of 3 development officers. I have just changed the names and faces. So the first story is of Ramesh, second is of Ashish, third is of Suresh. So first is Ramesh. Ramesh joined LIC in the year 1991, and his age is 55 now. And he was a, before joining LIC, he was a college student, and while in the college, he was a top performer. He was also a cricketer, and he was very, very famous. So he attracted a lot of friends during the college, and he was a people person. As soon as he became the development officer in 1991, he started meeting all his friends, the college friends, college associates, boys, girls, everybody that he met along the way. He started meeting them and telling them that LIC is a beautiful career. Why don't you come and join LIC? And as a result, he recruited somewhere around 70 agents within the first 3 years itself. And out of the 78, in 1991, if you know, there were not, we did not have many job opportunities, and many people were unemployed at that time. And any job opportunity, any additional earning opportunity anybody got, they always took it. So that's exactly what happened to, Ramesh. And Ramesh continued his success. Within a span of around 10 years, he was in a position to produce around 20 club members. And he was successful. And by the year 2005, he also produced around 5 MDRTs. And by the year 2015, it became 7 MDRTs. And his life was very good. He had a very good car, very good office, very good home, and his premiums were more than 3 crore rupees continuously for more than, if you see the last 10 years, he's been continuously producing more than 3 crore. But if you see today, his number of agents are continuously getting reduced, and he is not in a position to recruit new agents. Why is he not in a position to recruit new agents? Because anybody can tell why Ramesh is not in a position to recruit new agents anymore. For the last 7-8 years, he's not in a position to. Anybody would like to, if by understanding the story, anybody would like to volunteer with an answer? Why Ramesh is not in a position to recruit? Anybody? Instead of making it a one-sided lecture, I just thought if we can make it little interactive. Yes, Madhusudan Reddy. Yes. And then we are going to talk about Basavaraj Mallikarjun also. Madhusudan Reddy, why do you think this gentleman is not in a position to recruit in the last 5, 6, 7, 8 years now? I think that he's reached the comfort zone, sir. Very, very well said. Very, very well said. Okay, Basavaraj Mallikarjun, if you can also, you have raised your hand, so if you can also share your wisdom. Unmute yourself first, Mr. Basavaraj. He is not adapted to technology, sir. Very, very well said. Both are true answers, right answers. Anyone else who could? Appaji, would you like to add anything out here? Why Ramesh is not in a position to recruit? Yeah. Recruitment is almost a continuous thing, sir. Once a break has come, he has to put extra efforts to come back. Otherwise, cannot again be on the track to recruit agents. It must be done on a continuous basis. If at all there is a break. Brilliantly said. Brilliantly said. Yes. Pinnati Ravi.
You can also just share. He's otherwise engaged in procuring the business and Okay, your voice is not very clearly audible, Pennati Ravi. neglecting the recruitment. He is otherwise engaged with the servicing the present agent. Okay, so we met Ramesh and we analyzed and we realized that the techniques that he used between 1991 to 98 for recruitment are no more applicable. So all the things that Ramesh knew about recruitment are outdated. So he met all his friends who were unemployed at that time. Now whomever he meets, they are employed. And there is no job scarcity in India anymore. People are not desperate to become an insurance agent. And all and about that, people are willing to do a sitting job, office job. But if you tell them to go out and meet people and convince them for selling insurance, etc., they are not willing to take up this opportunity. So this is one of the challenges Ramesh told me, that people, despite of me meeting several people and convincing them several times, people are not taking up agency. Ramesh also told me that, the benefits that LIC agency offers, right? So when I go and meet a person to recruit agents, I have got to explain them. As a development officer, I have got to explain them that once you become an LIC agent, these are the benefits you will get. So in LIC, we have been given several scripts. Once you become an agent, you will get gratuity, you will get provident fund, you will get car loan, you will get office allowance, you will get stationery, you will get telephone allowance, you will get festival allowance, you will get this. So that there are a set of benefits when you become a chairman club member you receive. Ramesh says that all these benefits that agency offers are not any attractive to the new generation prospects anymore. So this is a challenge Ramesh is facing in terms of recruitment. This is what Ramesh said. Do you agree? If you agree, just show me a thumbs up, please. Yeah, so I can see Basavaraj, Mallikarjun, and a few other people show me. Everybody, please, if you don't agree, you can show this also, no problem. But, it's better that we respond to each other. Thank you so much. So that's what is Ramesh's challenge. Thank you so much. We will go to the second, story. Second story is of another gentleman called Ashish. Ashish joined LIC in 2004. He is 41 now, and he is from a metro city. Very dynamic, very dashing, very handsome, and he was also very attractive sports person during his college days. And at the age of 25, he joined in LIC. Somewhere 24, 25, he joined in LIC. And after that, he was very dynamic. And he was from an affluent family, so he started advertising in newspapers, and he started meeting people, and he did several activities. He was one of the most advanced activity doer in his branch, always learning from the seniors, always following all the best recruiters, attending all the training program. Everything that he learned in the corporation and from the seniors, he implemented for recruitment. As a result, he was in a position to recruit somewhere around 70 agents in the first 3 years itself. The problem was he got confirmation, and after confirmation, he found out that the agents that he thought would become MDRT, they are not becoming MDRT. Agents are not performing in a great way. And every year he is in a position to recruit 10 to 12 new agents since 2007. But almost the same number of agents get terminated also. So his effective strength today is somewhere around 42, right? 12 people join every year, 12 people leave every year, 12 people join every year, 12 people leave every year. And the effective strength has not increased. He is in a position to do somewhere around 1.5 to 2 crores of premium every year. And when I met Ashish, asked him what are the challenges, he says that, people are not willing to take up agency. People are not coming forward. Even if they take up agency, they don't work. They don't come for meeting. It becomes extremely difficult to make them pass the IRD exam. So he told me a series of challenges that he is facing. And he says there is no answer that he's in a position to find to these challenges. So this is what is Ashish.
And he says, I know that if I'm in a position to my personal target is to recruit 100 agents every year. And I meet more than 200 people, but they don't take up agency. Even though I'm working very, very hard, I'm not in a position to recruit agents. That's what exactly Ashish told me. Do you find Ashish kind of people in the corporation, many of them, yes or no? Working very hard, but not in a position to recruit. Are you also one of them? So this is Ashish. Let me also tell about the third story. And the third story, yes, thank you, Rajkumar Ghosh. You said, yes. The third story is another young man, and his name is, Suresh. Suresh joined in 2017. And in between 2015, more than 7,000 development PDOs were recruited. And out of 7,000 PDOs, he was a star. He was the only one who could recruit 30 agents, in the first 6 months, and he was the first one to get a kind of, confirmation letter from the corporation within 1 year. And he got confirmation. His premiums ranged in the very first year between 70 lakhs to 80 lakh rupees. He was a very, very promising young man. And in the second year, he recruited 30 more. And in the third year, he recruited 30 more. So 2017 to 1830, so 18 to 1930, 19 to 2030, and before 2020 pandemic, he recruited 100 agents. Now he has only 18 agents who are active. All of them have left. And now he wants to recruit, and he's meeting people, he's convincing people, he's advertising in Facebook, he's advertising in, different other social medias. He's trying to recruit through LinkedIn. He's doing everything possible, but he's not in a position to recruit. And this is the challenge that all the three are facing. When you meet them, whether it is Ashish, whether it is Ramesh, or whether it is Suresh, today, if you meet them, whether it is a development officer with 32 years of experience, or a development officer with around 20 years of experience, or the development officer with 6 years of experience, all the three of them have the same challenge today, and they're struggling for recruitment. And if you ask, why are you struggling for recruitment? The reason is, very, very simple. I would like to put the reason why they are not successful in a technical terminology. A terminology that can make you understand the actual challenge and how we can overcome that challenge. The challenge is that the development officers, PDOs, SBS, whoever you are, development officers were never given any specialized training on recruitment. Right? As a result, they all become development officers. They are all been given 2 months, 3 months of induction training. They have all been given a lot of inputs. And everybody during the programs, they said, recruitment is important, recruitment is important. No one gave a script. So when you meet a prospect, exactly tell like this. No one told that. No one gave them a presentation. How to present insurance agency as a career was never been given. No one gave a strategy about how to recruit. No one gave any material about how to recruit. And as a result, the entire field force of the development officers, even though they are so competent, so knowledgeable, so dynamic, so powerful otherwise in their job, they are not in a position to recruit agents. And I believe that if they are in a position to crack the recruitment code, they can all get into 4 crore, 5 crore premium every year. And they can all become insurance agents. You can all become, not in IB earners. Yeah. So you can all become IB earners. You can all become very, very powerful, successful SBS and in future LICAs. And you can have a great career. The question is how to do that. And that's exactly what I'm here to share with you today. So today in this session, we are just, we are going to learn today. Let's learn all the scripts, all the strategies, all the material, all the presentation on recruitment. And that's exactly what, so this is the first part of my presentation. If you all understood whatever I said as an introduction, in just 20 minutes now, just show me a thumbs up, please. Anybody wishes to ask any question? I'm here to answer, or we can immediately move towards the part 2 of the subject. Yeah. Part 2. My dear friends,
how to recruit. Before that, let us understand this concept. And the concept is called the 4 levels of selling. 4 levels of selling means all the people across the world, while selling, whether you're selling insurance or whether you're selling agency career, we follow one of these 4 levels. The first level is known as the asking level. Asking level in Hindi means mangana, right? So you go and ask people to buy a policy. Sir, why don't you buy an insurance policy? Right? So it is just like asking for a favor, asking. Asking can also be crudely said, it's like begging. Or you go and meet a person, why don't you become an LIC agent? You tell that. So when you practice agency recruitment or insurance policy selling at asking level, the conversion ratio that you get is only 2 to 3%. So out of 100 people that you meet and ask, only 2 people say yes, 98 people reject you, right? So this is what is asking level. The second level is called the telling level. Telling level in insurance selling means an agent goes and tells the prospect that if you pay this much, you will get this much. And this is what is Jivan Umang, this is what is Jivan Anand, this is what is Jivan Shiromani, and in Jivan Shiromani, this is age of entry, and this is the age of exit, and this is what is the loan available, this is what is the maturity, this is the premium amount, etc. And similarly, when you go to meet a prospect as a development officer for recruitment, you go and end up talking about agency benefits. If you become an agent, you get commission, you get renewal, you get a gratuity, you get provident fund, you get stationary allowance, you get car advance, you get home advance, etc., etc. So this is called the second level, which is called the telling level. So first is asking, second is telling. And when you practice insurance sales or recruitment at telling level, the conversion ratio is around 5 to 10%. So while practicing at asking level, the conversion ratio is 2 to 5%. At telling level, 5 to 10%. And the third level of selling is known as the selling level. When you practice insurance sales at selling level, which means an insurance sales person goes to the prospect and asks several questions. So what is your monthly income? What's your monthly expenditure? Where all do you save your money? How much of insurance do you have? What are the other investments? What are the properties you have? Do you have any loans? What are your children doing? What are your plans for your children's future? What are your plans for retired life? And what is the risk cover that you have? He asks all these questions and he understands the need or the gap between where the customer wants to go and where the customer is. And he creates the gap, which is known as need. And he presents insurance as a solution to cover that need. So that's exactly what is known as selling. Practicing at selling level. When you practice insurance sales at selling level, the conversion ratio is between 10 to 40%. Right? Similarly, as a development officer, you go and sit in front of a prospect and ask him, what is your dream and what is your goal? And within 5 years, what is your dream for your child's future? What's your dream for your wife's future? What's your dream for your son's future, daughter's future? How much money are you going to require for agency? For how much money you're going to require for their children's education, their wedding, and etc. So he understands that as a human being, I have many dreams. And he also understands by doing the job that you're doing or by doing the business that you're doing, would you be in a position to fulfill the dreams of your family members? The person says no. That means you require something. You require another source of income. And then he says, LIC agency is one of the greatest opportunity. So why don't you take it up? So most of the agents or prospects tend to agree when you practice recruitment at selling level. So we just covered about 3 levels, okay? And the first level is known as asking level, second level is telling level, and the third level is selling level. If you have understood whatever I said, you can just show me your thumbs up, please. Anybody would like to ask any question out here? The fourth level is known as educating level. Educating level is very, very advanced. You don't ask him to become, or you don't ask him to buy a policy.
You don't tell him to buy a policy. You don't sell the idea of buying a policy. You educate the customer. Why should he purchase an insurance policy as an agent? Similarly, as a development officer, you don't ask him to take up agency. You don't tell him to take up agency. You don't sell the idea of taking up agency, but you educate him. Why should he take up agency? And when you educate a person, why should you take up agency? He takes up agency very, very happily. And not only he takes up agency, but also he speaks to 5, 10, 15, 20 other people to recommend them to take up agency. My dear friends, by showing you all these cards, practicing at asking level, telling level, selling level, educating level, I am here to tell you that if you are in a position to practice agency recruitment at educating level, you all would become extremely successful in recruitment and everybody would take up agency under you. If you have understood whatever I said, just show me a thumbs up, please. Now the question is how to practice agency recruitment at educating level. And for that, you need material, you need scripts, you need ideas to sell agency. Okay, now that's exactly what we have created. We have created this kit. Now this is a kit for agency recruitment. And this kit is like a machine gun, a Sten gun, AK-47, AK-55, AK-56. And you are just like a soldier. When you don't have a kit, you are a soldier without any weapon. When you have a kit, you have a soldier with all the weapons to protect, right, to fight. So when you meet different kinds of people, the script that you need to follow has got to be different. Just to give an example, for every disease, the medicine is different. For cancer, the medicine is different. For heart attack, the medicine is different. For liver, the medicine is different. For kidney, the medicine is different. The kidney medicine would not work for heart attack. Heart attack medicine would not work for cancer. Cancer medicine would not work for liver damage, right? So you need to have right medicine for the right disease. Exactly like that. There are different kinds of prospects. There are some people who are job goers, some people who are women, some people who are businessmen, some people who are, professionals, some people who are married couples, some people who are students and youngsters, some people who are, retired people. And for every kind of a prospect, you need different material altogether. So this kit consists of all those materials. For instance, if you are meeting a person who is doing a job, this is the material you show. And this material consists of all those illustrations. This is an illustration. All those photographs, all those emotions, all those ideas, illustrations, strategies, and the pain points that a job goer undergoes. And when you talk about these things, he would immediately take up agency. Just to give you an idea, and I would, there are totally 16 ideas that are presented for a job goer. I'm going to show one of them. Shall I show one of that to you? One strategy out of 16 only for job goers. Shall I show, yes or no? No one is showing thumbs up. Yeah. Okay. I want one of you to become a prospect for me and become a job goer. Who would like to volunteer that? Any one of you who can volunteer, just talk to me so that I can unmute you. Anybody? Come on, guys. Any one of you can show me your hand. Come on. Anybody who wants to volunteer? Gauri Shankar Rao, would you like to unmute? Okay, thank you. You can unmute yourself. We are assuming, Gauri Shankar Rao, that you are a person who is doing a job. Okay, you are a job goer. Okay, so let me just pin you out here. And let me pin myself also. We are the only two people who would be visible. So Mr. Gauri Shankar, when you do a job, this is an illustration that I would like to show you. This illustration says successful monthly income for a job goer. Mr. Gauri Shankar, here it represents
1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh, like this. Can you understand, Mr. Gauri Shankar? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And this represents, this x-axis represents 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, like this up to 25 years. Mr. Gauri Shankar, is it okay? Yes, sir. Okay. So this means, this illustration means, Mr. Gauri Shankar, when you do a job, when you start initially, your salary is less than 1 lakh. Can you see less than 1 lakh here? Yes, sir. Yes, sir. And after 3-4 years, it almost reaches 78,000. And after around, 10-12 years, your salary, monthly salary reaches 1 lakh level. And it grows. By the 25th year, your monthly salary reaches somewhere around 2 to 3 lakhs. This is if you are very, very successful in a job. Right, Mr. Gauri Shankar? Yes, sir. Now, Yes, sir. when you take up LIC agency, your career in the same 25 years goes like this. It starts at the same level like a job. Initially, the monthly income would be very less. But after some time, the monthly income grows like this. But means by the 25th year, your monthly income would be more than 20 lakh rupees. When you do a job, your monthly income after 25 years would be hardly 2 to 3 lakhs. When you do a LIC agency, your monthly income would be like this. So, Mr. Gauri Shankar, would you like to lead a career of 25 years like this or like this? Like Yes, sir, number sir. 1 or number 2? Number 2, sir. Number 2, sir. Number 2. Now, this is just an illustration. Thank you so much, Mr. Gauri Shankar. I'm muting you. Be there. So we will just, use you or ask you for help us whenever a demonstration is required. Okay, thank you so much. Okay, so this is just one illustration. And there are other illustrations. So there is an illustration which speaks like this is another illustration. Okay, so, and I'm just removing that. This is another illustration. This is another illustration. So we have got many illustrations, and these illustrations explain the person who is doing. This is a photograph, and this is the kind of pain people undergo. So when you have this document with you, this works like a machine gun to recruit agent to anybody who is doing a job. But this particular material will not help you recruit women. So when you are in front of women, the material that you show is this one. Now, this is the material, and this is what attracts women as agents. The ladies want different kind of feelings. Ladies want a different kind of identity. If you are in a position to speak those few sentences, every lady would take up agency. My dear friends, let me also tell you that if a lady becomes, fundamentally, if she puts little efforts, her chances of becoming successful in insurance agency is higher than that of men. Agency profession suits women more than men. You all know that, yes or no? So it is extremely important that you have hundreds of ladies in your agency and in your team. And this is what you show ladies to become an agent under. So let me also show you one illustration out of 16 illustrations that we have for ladies. Any lady out here, who can volunteer? There were a couple of ladies and just they disappeared. My dear friends, any ladies? Okay. Anyone would like to volunteer like a lady? I just would like to show you an illustration just to make you understand that how rich the material is. Anybody? Okay, no one is volunteering. So what we have is a different category of information sheet for ladies. Similarly, for businessmen and shopkeepers, when you meet businessmen and shopkeepers, what you show has got to be different from what you show a woman. So the kind of emotion, the language that businessmen understand is profit. The language that the businessman understands is initial investment. The language that the businessman understands is how many hours I have to work, how much I am investing, how am I going to become successful. So the kind of illustration that make a businessman take up agency are this. Similarly, when you're in front of a professional, a chartered accountant, a sports person, a musician, this is exactly what you show, and they take up agency. Similarly, when you're in front of a retired person, retired people are very, very valuable. And when you show these benefits,
to the retired person, and these illustration to the retired person, these emotions to the retired person, he takes up agency. Similarly, we're in front of a youngster. This is the material that you show, and this material helps them take up, agency. They would become agent under you. And similarly, sometimes, you are in front of a person, a wife and husband, and you show this particular thing, and they would take up agency. Many a time, you go and convince a woman, and when you go and follow for the second day, they would say, the woman would normally say that my husband has said no, or I will consult my husband. So instead of allowing the lady to consult the husband, it is very, very important. You go and meet both husband and wife, and you show them this particular illustration, and every husband would immediately allow his wife to take up agency under you. So like this, we have totally 12 sections. So this is another section, okay? And if anybody offers you any objection, this is another section. And this is another section. Totally, there are 12 sections that are loaded in this kit. And all the 12 sections are created with a lot of research about how to recruit agency, right? We have completely uplifted the script of agency recruitment, and that's exactly what we have created for you. Everybody understood? Just show me a thumbs up, please. So my dear friends, this kit is called the MDRT Agent Recruitment Kit. The reason we call it MDRT Agent Recruitment Kit is because the benefits of normal insurance agency are supposed to be outdated, or the latest benefits that LIC agency offers are not taught to the development officers in a professional way. Today, as a development officers, we have two major challenges. Challenge number one is called credibility of agency. Challenge number two is called credibility of individual. Credibility of agency means when you go and talk to a prospect, he feels that agency is a small profession. Agency is a normal thing, ordinary thing. But actually, agency is not an ordinary thing. Agency is a very, very special thing. Agents are extremely successful. Here I have a list, okay? And this is the list of MDRT, COT, TOT. And this list consists of all the 16,500 MDRT agents of LIC of India. Okay, in this list, we have said these are the top agents and how much of money they are earning and what is the kind of lifestyle they're leading. And these peoples, if they don't work today, their renewal commission is approximately more than 20 lakh rupees. If they don't work, they get 20 lakhs. In other words, they get 20 lakhs of pension. When you show this particular thing, people would understand the value of agency, right? And when you show the list of the 16,500 MDRT agents, people would understand the value of agency. If everybody understood whatever I said, just show me a thumbs up, please. So therefore, in order to increase, uplift the value of agency, we have created this kit. And the name of the kit is MDRT Agency Information. So when you meet a prospect, you are not going to say, I'm come here to make you an LIC agent. You are going to say, I'm here to talk about a new agency LIC has created, and that new agency is called MDRT Agency. And when you become an MDRT agent, you get 6 benefits. And the benefit number 1 is this. Benefit number 2 is this. Benefit number 3 is this. 4 is this. 5 is this. 6 is this. So, sorry, 5 and 6. 5 and 6 are these. So when you show this, the customer, the prospect, takes up agency. My dear friends, if you are in a position to follow everything that I said, yeah, I just want to, before coming to the third and final subject about how can you get this, the kit, and how are we going to train you with this kit, I would like to just wanted to do a small role play if possible. If any one of you can volunteer with me. Veera Nagireddy. Yeah, Appaji.
Would you like to, let us say I am a prospect. Would you like to recruit me? Try to recruit me by telling me about LIC agency. Would you like to recruit me? Or would you like to use a canvas? Or anyone would like to do that? Pramod Sharma. I cannot see Pramod Sharma. Okay. Pramod Sharma, SBA. You can put a switch on your video, Mr. Pramod Sharma. I can allow you. Appaji, can you try to recruit me? But anybody can recruit me. Just use, I mean, I just want to explain how this is going to help you. For that, we would do a demonstration, a role play. You do a role play with me, I do a role play with you. Sir, shall I try? Yeah, please. So let me, Mr. Appaji, let me add pin to you. Both of us are here. So I am a prospect. Mr. Appaji, you are trying to recruit me. Good evening, sir. Great evening. I am Appaji, Senior Business Associate from LIC of India. Thank you, sir. I just want to discuss about an opportunity with you. Right. What are you, sir, right now? What are you doing? I am a teacher. Great, sir. Great job. But actually, how old are you, sir, now? I am 45. Okay. Sir, of late, LIC has done a survey in the country. People are with the changing family system in India. Retirement options or benefits of retirement are more purchased by people around. Most of our customers are buying retirement solutions of late. The reason being, slowly family system is changing, and we can no longer depend on our children for our benefits. Right. So with this, and any retirement benefit will be best when it is started at the age of 25 or 30. Right. I just want to know what kind of plan you have done for your retirement. I have not done any planning. I have not done any planning. Great, sir. And here, instead of you saving something, because it's already late, you are at 45 now, right, and hardly you have another 10 years more to reach the state of retirement. Right. Instead of you spending some money on it, or instead of you paying some money for it, you can straight away earn a retirement benefit from LIC of India. Okay. It is an interesting way. I just wanted to discuss with you. Yeah, do you have a time for it? Yeah, I'm ready. Great, sir. And just what I have told you is the actual idea. People want retirement thing. And LIC is the most dependable organization in the country to buy a retirement plan, because retirement means is a long-term benefit, 30, 40 years. An organization of this stature only can give you that kind of benefit. Brilliant. And if you can sell that idea to people around, they will definitely come forward to get it, and you get your retirement also. While selling the retirement benefit, you can arrange for your own thing. This is the idea, sir. Brilliant, brilliant. So what you are saying is, what is the proposal? What do you want me to do? What I suggest is, join us, join in my team. Here, we have a wonderful tailor-made retirement solutions for you, for our people around. We will teach you how to sell them. If you can just spend 2 to 3 hours a day on meeting for 5 customers every day and sell at least one policy, it would create a wonderful retirement benefit for you. This is the idea that I wanted to put before you. Okay. So what you want me to do is, you want me to join your team and start meeting 5 people every day and sell them retirement plan. Is it what you want me to do? Exactly. That is almost like that. Yeah. Thank you so much. It was wonderful. So let us give a big round of applause. You have got a script, you have got an idea, you have first opened the mind, then you have presented a solution. And when I asked you, is it what you mean? You said, yes, this is what I want. And that affirmation is what every development officer should have. So I'm proud of you. That's the reason you are an SBA, Mr. Appaji. Okay, so this is one script. Okay, so if the person accepts, it's wonderful. Otherwise, also script wise, you are very, very rich. So let us just, if same thing, can it be improved upon, or the script, can it be done even better? So shall I do another role play with you, Mr. Appaji? Shall I do a role play? I would become a development officer. Okay, you have muted yourself, is it? Yeah. So shall I do the role play? So, Mr. Appaji, my name is Rajesh Tagore. I work as a development officer for the Life Insurance Corporation of India. I have this kit called MDRT Agency Recruitment Kit. I just want to show you this kit, Mr. Appaji. Can I show you? Please, sir. Thank you.
So this Right. is a new agency that agents LIC has created, Mr. Appaji. There was something called LIC agency, if you know. There are so many LIC agents. Yeah, I know. An upgraded version, MDRT agency. I'm just giving you that information. When you become an MDRT agent, Mr. Appaji, you receive 6 major benefits. There are approximately 60 benefits. The primary 6 are the major one that I'm showing you. Number 1, Mr. Appaji, is MDRT agency offers you 12 lakh rupee first year commission. Can you see that, Mr. Appaji? Yes. Yes, yes. That means, Mr. Appaji, you would receive more than 1 lakh rupees from the very first month itself. So, Mr. That's fine, Appaji, sir. here you can see this is an illustration. There are 4 kinds of agencies. I would like you to put your attention here only, Mr. Appaji. A normal agent, Sure. approximately on Yeah, I see that. 70,000 monthly and annually 2 lakh rupees. An MDRT agent earns 1 lakh monthly and 12 lakhs annually. COT agent and TOT agents earn like this. So I'm here to talk about MDRT agency, 1 lakh monthly. This is the first benefit. The second benefit, Mr. Appaji, is MDRT agency offers an opportunity to visit USA every year. When you become an MDRT, you alone visit, and when you become a TOT agent, you can visit with your spouse. So TOT is little higher than MDRT. Third benefit, Mr. Appaji, is that MDRT agency offers a renewal commission, which is like pension. Okay, Mr. Appaji, when do normally people receive pension? Only in government jobs. After retirement. Right. After retirement. People receive pension after 30 to 40 years of work. After Exactly. that, when they retire, they receive pension. But Mr. Appaji, in MDRT agency, you start receiving pension from the second year only. And this is how it works. Can you see MDRT agency? After 1 year, your lifelong pension would be 15,000. After 2 years, it is going to become, can you see this? Yes, yes. How much? Yes. 30,000. And after 5 years, Mr. Appaji, after 5 years? 75,000. And after 10 years? It's 1.5 lakh. And after 30 years? It's 4.5 lakhs. So this is the pension that you receive for lifetime. This is benefit number 3. And benefit number 4, Mr. Appaji, is MDRT agency offers you something called hereditary commission. Hereditary commission means this pension, let us say you worked for 30 years. You're supposed to get 4.5 lakhs. This 4.5 lakhs you are going to receive. And after you, your spouse is going to receive. And after your spouse, your children would receive that money. And after your children, your nominee would receive that money. Now that's what is known as hereditary commission. The fifth benefit, Mr. Appaji, is that LIC agency offers you something called car. So for MDRT level, you get 5 lakh rupee interest-free car loan. And for TOT agency, how much, Mr. Appaji? 30 lakhs. Yeah, this is the fifth benefit. And for the sixth benefit, the MDRT agency offers you the opportunity to buy home. For MDRT agency, it is how much? 25 lakhs. And for TOT agency, it is 1 crore. 1 crore. So these are the 6 benefits. So these are the 6 benefits, major benefits, Mr. Appaji. Out of these 6, which one do you like the most? The renewal part, renewal commission, that is fantastic. So why do you feel renewal is fantastic? That is not available anywhere else. Anything, any job. So would you like to take up this agency, Mr. Appaji? Yes, why not? So that's a script, my dear friends. So the difference between what Appaji communicated to me and I communicated is, Appaji only used verbal communication. He told a beautiful story, but only verbally. I also used a beautiful story. It was very structured, very professional, and it was supported with written evidence. Mr. Appaji and everybody, people are going to ask 2 important questions out here. Appaji agreed here, but people are going to ask 2 important questions. Question number 1 is, what is the difference between a normal agency and MDRT agency? This is the first question people ask, and immediately we turn the next page and we show this.
So this is the difference between a normal agency and MDRT agency. Okay, so when you receive the kit, you can see all the details. And the second question, actually there are three questions. I forgot about this, the third one. I will show you all the three. The second question people ask is, if I take up agency, what should be my job? What would be my job? Okay, so once again, we will do the reversal, Mr. Appaji. I am the agent now, prospect. Let us say I'm asking you, tell me, what is going to be my job if I take up agency? LIC agency, the whole job is to meet people. Okay. To meet people. Every day, there are so many people around you. You list them down in a format and keep meeting them. Keep asking them questions about their needs, telling them the solution for them. And this is the whole thing. Every day, give some time to LIC agency, keep meeting people. And the LIC's average is, if you meet 5 people, at least one person will decide. So this is the... Brilliant. So this is what, happens, when you are not professionally trained and the prospect asks you, what is my job? You fall into a trap of explaining this. There is a professional answer. Your answer was good, by the way, Mr. Appaji, but it can be even professional. Okay, when you become a professional, when you carry this kit, when people ask, what should I do? Now, I am the DO now. You ask me, what should I do? What is going to be my job? Ask me. Sir, what shall you do as an agent by join? You're asking me, what's your job? So, Mr. Appaji, this is the question you're asking? Exactly. So, Mr. Appaji, there will be 4 phases in your agency. In all the 4 phases, your job would be different. For instance, phase 1 is called the initial success period. Now, this is the first 18 months of your career. Mr. Appaji, during these 18 months, your job is to show lifestyle presentation. 10 people every day. Can you read this? Yes. 50 people per week. Almost, I should write it down. I'm not able to see. 200 people monthly and 2,000 people yearly. And show and sell insurance. This is your job in phase 1. And in phase 2, this will be your job. In phase 3, so in phase 2, the next 36 months, your job would be this. In phase 3, the next 72 months, your job would be this. In phase 4, the next remaining part of your life, your job would be this. So like this, now people might ask, what is a lifestyle presentation? And when they ask what is a lifestyle presentation, would say this is the lifestyle presentation. See, Mr. Appaji, I'm coming and showing this to you because this is my job. You go and show this presentation to people, that is going to be your job. How to show, I will teach you. This particular presentation, I will give you. Whom to show, we will teach you. Your job is to show it to 10 people every day, 200 people every month. Very simple, isn't it, Mr. Appaji? So shall we sign the contract? Shall we sign up? Okay, the third question that people ask, I have already told you 2. The third question people ask, Mr. Appaji, is these are smart people who ask this question. They say, is it so easy to become MDRT? And that's exactly when you show everybody that I first thank him for asking. When you show that, Mr. Appaji, this is the list of MDRT agents of India. And this was the list of 16,500 MDRT agents. Now, what I have is the list, and doing you like this. So, this list consists of name of the, the agency code, name of the person, branch, and how much premium and how much commission, and like this. Mr. Appaji, all these are MDRT agents last year, all these are MDRT agents last year, all these are, and all these are MDRT agents, and all these are MDRT agents, all these are, from different zones, and they're all earning how much? 12 lakhs every year. They're all earning renewal commission, and they're all earning hereditary commission. They're all receiving the car. They all purchased 1 crore rupee home, and they all are in a position to
increase their pension, their renewal every month. All these people, all this. Can you see how many people are becoming successful? All these, Mr. Appaji, all this. Can you see this? Can you see this? This is not one or two. This is not 100 or 200. This is not 1,000 or 2,000. This is the number of successful agents in the country. Actually, their names, their incomes, everything I'm mentioning you, and the total number I would like to show you, Mr. Balaji, out here. Not Balaji, Appaji, sorry. Please forgive me for, so the total number. Can you read this final? 16,511. These are the number of people who qualified for MDRT last year, and this year it was 22,000 indeed, and every year it is increasing. And this agency I'm come to give you. My dear friends, we are just going to conclude this particular, interaction with Appaji here. And what I'm here to tell you is that you all should have material for canvassing agency, material that supports facts. This is real MDRT dystrophy. And this is the kit that consists of 12 sections. I'm going to conduct a program about how to use this kit and how to recruit agents. And this program starts on the 9th of May and it ends on the 10th of June. And this program is going to be conducted for 5 days a week in the morning between 7:30 to 9, 1.5 hours. And this kit consists of all this information and those, days. So this consists of, so this is the kit. So there are going to be 72 visuals, 72 explanations, 72 illustration, totally 216 ways to establish superiority of your agency. This is exactly what this kit has. And, when you carry this kit, prospecting becomes easy. I'm going to teach you how to do prospecting in those 25 days from 9th of May to 10th of June. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, morning 7:30 to 9:30. It is compulsory to wear suit and attend that course if you are sitting in the Zoom, or it is going to be live, free in YouTube channel, in the NFFWI channel. And meeting people becomes simple, presentation becomes strong, convincing becomes effortless, storytelling becomes natural, recruitment becomes your strength instead of weakness. You can recruit hundreds of people after that. And the 25 days, day 1, this is going to be the content. Day 2, this is going to be the content. And day 3, this is going to be the content. And day 4, this is going to be the content. And day 5 and day 6 and like that. Day 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and 25. This is going to be 25 days training program. And this kit, is, many people ask me, is it available in English or Hindi? And I would like to tell you that the kit is available. 2 separate kits are available. One complete English and one complete Hindi. Both are separate kits. You can either buy a Hindi kit or you can purchase an English kit. Many people ask me, if I pay today, when would I receive kit? The program is going to start on 9th. It is important that you receive the kit before 9th. So if you pay today, you are going to receive the kit. We are going to send the kit, dispatch the kit tomorrow evening, so that you would be in a position to receive within 5 to 7 days. And we have exactly got 7 days for the training to start. So the kit consists of all these 12 sections. Yeah. And what is the most important question out here, Mr. Appaji, about the kit? Yeah, you are unmuted. No problem. We can. No, again, you want me to Yeah, the question? when you see the kit, what is the question that comes to your mind? Obviously, the cost. Yeah, thank you so much. The cost of the kit, actually, when private companies buy this, they pay 72,000 rupees. And that 72,000 rupees does not include this MDRT list, and it does not include this particular thing, and does not include the training. Right? So 72,000 only is the kit. The training costs around 25,000 more. So totally the package is 1 lakh rupees. And this 1 lakh rupee package was earlier offered for 10,000. Now for the first time ever and last time, we have a special offer, and the special offer is available to you only for 6,000. So my dear friends, by paying 6,000 rupees, it is done only because of NFIF FWI, central leadership, Mr. Vivek Singh and Mr.
Vinay Babu together. They said that, Mr. Rajesh, you have to reduce the price. Our comrades have to get benefited this year. So we have reduced the price to 6,000. And when you pay 6,000, you get the entire 12 sections of the kit. And apart from the kit, you get 25 days of training free. The question now is, this question is available both in Hindi. So this is the Hindi kit, and this is going to be the English kit. Both are different. Remember the mobile number. I would like you to write down the mobile number right now, 98201-57787. And this is the number. And you can buy the kit from www.rajeshtagore.com. That's my website. When you go to website, we have actually, this kit was available for 72,000 rupees earlier. Now for today and tomorrow, we have reduced it to 6,000 rupees. You can take benefit of that, buy the kit immediately. This kit will not be available for 6,000 forever. This is an NFIFWI program. For the first time, we have reduced it to 6,000. So for information, or you want to purchase the kit online from rajeshtagore.com, or if you want a credit payment, we can send you the credit card link. You have to call or WhatsApp 98201-57787. So I would like you to note down that. And if you want to send a GPay, the GPay number is the upper number. So there are two different numbers. This number is only for GPay or phone pay. So 9324223757 is for GPay or phone pay. And once you pay GPay or phone pay, if you want to use that tool, after paying, you have to take a screenshot, and that screenshot should have that UPI ID also. So take a screenshot and send that screenshot to our regular number, that is 98201-57787. Okay, so GPay number is different. Our office number is different. GPay number is only for payment. Office number has to be sent. And once you send this particular screenshot with the UPI ID code, we are going to send you a Google form. And you have to fill up that Google form, which consists of your address, home address, and other things, and so that we can send you the particular thing, the kit, within 24 hours by tomorrow evening. And if you want to directly do transfer, this is our account number. You can take screenshot of all these things. So this is the rajeshtagore.com. This is the GPay ID and other things. The best way is to directly go to the website and purchase from there. 6,000 rupees. This offer is available only for today and tomorrow. Right now, you can purchase immediately. So within 5 minutes, I have got to close this, and we have got to start the Hindi program after this. Right? We have got to start the Hindi program at 7:30. So, I would like you to open the forum to ask you. If you have any question, you can ask me. Anybody has any question? I have unmuted all of you. Anyone's? This recording is also available for us. This recording is live on the NFIFWI channel, YouTube channel. So you can see whenever you want this channel. And all the 25 days training program is absolutely free. Whether you purchase the kit or not, the training would be available in the channel forever. So training is going to be free. But that training would require you to have a kit. This entire training is going to be with the material, with this material. So you require this material to take the benefit of the training. Yes, that is about Mr. Appaji. Any other question, anybody? Everybody is unmuted. So, all right, that's wonderful spending time with you. Sir, one query is there from my side. Yes. Basically, from Aurangabad. See, you are starting this training program from 9th of May. But Right. there is a problem because for 4 or 5 days we are out of station. Since the marriage season is there, so we have to go there. So Right. what will be, is there then anything that you can? This training is going to be available on the NFIFWI channel completely. So day 1, day 2, day 3, day 4, all the entire 25 days training is going to be available in the NFIFWI channel, YouTube channel, educational series channel forever. So that would not make any difference. Okay, so we'll not face any problem. Yes.
So Oh, this is going to be completely NFI, FWI, National Federation of Insurance Field Workers of India sponsored program. And that is one of the reason the price is reduced from 10,000 to 6,000 only for today and tomorrow. right. Right? Right. Yes, sir. Swapnil Patil has already sent 6,000. How much is that? 6,000. He said, Swapnil Patil, congratulations. Yeah. Gopal Nagaraj is saying, can I send my, on the YouTube, he's asking, IG Nagaraj, can I send my address by WhatsApp? Mr. Nagaraj, on YouTube, I'm answering you. You cannot send the address by WhatsApp after making the GPay payment. If you are paying it in the website, before paying, you have to add your address. So that is naturally in the website, in the link, you will have to first add the address. That means we will first get the address, then only we are going to receive the payment. That is compulsory. But if you are paying through GPay or if you are paying through some other source, then we are going to send you the link, the Google form. And that Google form, when you fill up, we get the address immediately. So you need not send it on the WhatsApp, Mr. Nagaraj. Yes, Sirish Shroff, it is over. Pinnati Ravi, you want to ask a question? Sir, is it only available on YouTube channel or Zoom live class also is it? Live. Zoom also it will be live. My dear friends, my Zoom has 1,000 connections. That means at a time 1,000 people can sit in this class. Okay. I have two important rules for Zoom class. Rule number one, during the training program, you have to wear a suit and you have to wear a tie for this class. If you're not wearing the suit and tie, I'm not going to allow you to sit in the Zoom class. It is compulsory, right? And number two, the reason for that is those 25 days, few days, I am practically going to go out and meet people and recruit with one or two or three or four of you. So we will be going out on field and I am going to do demonstrations and I'm going to show you that this is how you can recruit. So my class is not going to be only lecture. It is going to be absolutely practical. Okay. And I want to teach that in order to sell insurance agency at a higher level, you have got to become professional, and the professionalism starts with professional dressing. So if you're not wearing a suit, then you have to attend the course in the YouTube. So YouTube, anyone can attend. There is no restriction over there. So only those 1,000 people who are willing to wear suit and be on time and keep the cameras on. That is the second rule. Wear suit and keep the cameras on and interact whenever we ask you to. So Mr. Tejas Patel, I'm asking about after 9th May. After 9th May, we are not going to have a session in English. This is going to be a regular Hindi session. And it's only one session. It starts in the morning at 7:30. It ends by 9 a.m., 1.5 hours, right? And the practical sessions are going to be on road. I purchased the kit already and I want to attend the session. Yes, it is going to be free for everybody who has purchased this kit. Rajesh? Yeah. See, then why don't you make it Hindi and English mixed? We will miss some points, na? Yeah. So, Mr. Appaji, anybody whoever asks me a question in English, I'm going to answer them in English. Otherwise, this program consists not only a classroom lecture or Zoom, it is also going to consist of me going out and meeting people on field. And I don't expect, an English-speaking audience on the streets. So I have to speak to them. I would be doing these cold calls in Maharashtra and Gujarat and, in Madhya Pradesh and places like this. Every day, I would be doing this training program from a different city. Okay, so first 5-6 days I would be from Bombay. From other days, I would possibly be going to some other city and doing cold calls also over there. So that has got to be done in Hindi. Therefore, the program would be in Hindi. Mr. Appaji, did I make it clear? Yeah, but whenever you are there in the class, just while Whenever explaining a anybody point, asks me a question in English, I'm going to answer in English. And anybody asks a question in Hindi, I will answer in Hindi. Sir, Yeah, Raj Narayan Tripathi ji. sir, I want to know that kit the kit you will be giving to us Yeah. is only be MDRT agency kit, or as you show up that for a women agency or other thing.
all the 12 sections. I'm going to give you, so I will just show you that. This is going to be section number 1. Yeah. This is a 20 pages section. So this is going to be the entire agency kit. And this is going to be section number 2. Okay, this is going to be section number 3. This is going to be section number 4. This is going to be section number 5. So, and this is going to be section number 6, right? Yeah. And this is going to be section number 7. Yeah. This is going to be section number 8. This is going to be section number 9. Yeah. This is going to be section number 10. And this is going to be section number 11. This is going to be section number 12. Like Yeah. that, the entire 12 sections to this kit. So this is a kit, and this kit, okay, this is the thick box. It's not a small box, and this Yeah. weighs around 2.7 kilos. So this Yeah. entire kit would be sent to you, Mr. Raj Naran Tripathi. Did I make it very clear to you, Mr. Raj Naran Tripathi? And payment will be done by credit card also, na? Yes, payment can be done in credit card. For that, there are 2 options, Mr. Raj Naran Tripathi. Number 1, you can go to my website right now and pay right now. Yeah. And the second option is you can call up our number and we will send you the website link, the payment link. And our number is this one. You can make a note of our number, 98201-57787. And if you have a GPay or other things, you can pay right away, GPay. Anybody made a right away a payment right now? Rajendra Kumar is asking from the YouTube. Any extra payment? There is no any extra payment, no? If I There is no pay extra through credit payment, card, only, no, 6,000 is the money that you have to credit. by credit card or by GPay, whatever the payment mode. Yes. Okay. 6,000 only. So Rajendra Kumar is asking timing of the training program. The timing of the training program is morning 7:30 to 9, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 5 days a week, and it continues for 5 weeks. Starts on the 9th of June, it ends on 9th of May, and it ends on the 10th of June. So 9th of May is exactly 1 week away from today. Today is Tuesday. Next Tuesday morning, we are going to start the session. And for that, you have to receive the kit before Tuesday. And for that, you have to make the payment immediately. Yeah. Make the payment immediately and take benefit of this course. My dear friends, this is exactly 8:15 now. We are going to close this particular thing. And I would like you to leave immediately. Or if you want to attend the Hindi class also, you are welcome. We are going to start the Hindi class at 8:30. Till then, I'm not going to close, but you can leave. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah.
Hello.
बराबर 8:30 हुआ है। नमस्कार, ग्रेट इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम एवरीबॉडी। स्वागत स्वागत सभी का। अभी अभी हमारा अभी इंग्लिश का प्रोग्राम समाप्त हुआ और हिंदी स्टार्ट हो रहा है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया NFI FWI की तरफ से, लीडरशिप के सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से, विवेक सिंह साहब की तरफ से और विनय कुमार साहब की तरफ से मैं राजेश टैगोर आप सभी का स्वागत करता हूं। सारे कॉमरेड्स भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज अगर आप लोगों को सुनाई दे रही है और मैं बराबर दिखाई दे रहा हूं तो जरा एक बार थम्स अप कर देंगे तो बड़ा मेहरबानी हो जाएगा। यस, राकेश दीक्षित जी, मैं आपको, राज कांडे साहब, मैं आपको देख रहा हूँ। नहीं भाई वेंकटेश्वरलू, आप ये अप्रूवल वगैरह मत मांगिए। तो धन्यवाद, ग्रेट इवनिंग टू यू। क्विकली हम लोग प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट करते हैं। आप में से किसी को भी मुझे बात करना है तो ऐसा वीडियो कैमरा ऑन करके ऐसा हाथ को ऐसा वेव करेंगे तो मैं आप लोगों से बात करने का मौका दूंगा। यू कैन नॉट मूव वीडियो वाइल पीपल आर पिन्ड। ओके, सो ये कुछ ना आप लोग ये मत करिए, क्या बोलते हैं उसको, जूम के अंदर वो मतलब कुछ भी छेड़छाड़ मत करिए, तो यहाँ पर प्रोग्राम में मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। क्विकली स्क्रीन शेयर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सेक्रेटरी जनरल श्री विवेक सिंह जी एंड ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री विनय बाबू साहब, NFI FWI लीडरशिप की तरफ से मैं राजेश टैगोर आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सो वेलकम टू एजेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। आज का इफेक्टिव एजेंट रिक्रूटमेंट 1 घंटे का सेशन है। मैं आपको 9:30 मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर्स के साथ ये प्रोग्राम को कंप्लीट करूंगा। शुरू करते हैं। MR कुमार साहब जो अभी अभी रिटायर हुए एज ए चेयरमैन, वो कहते हैं कि यू कैन नॉट ग्रो विदाउट रिक्रूटिंग कंटिन्यूअसली। ये इनका मैं स्पीच सुन रहा था, उस स्पीच में ऐसा कह रहे थे कि डेवलपमेंट ऑफिसर्स आप जब तक रिक्रूट नहीं करेंगे तब तक ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, IB अर्न नहीं कर पाएंगे, ऐसा MR कुमार साहब कह रहे थे। फॉर्मर LIC चेयरमैन DK मल्होत्रा साहब, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेवलपमेंट चेयरमैन ऑफ द कॉर्पोरेशन, वो कहते हैं न्यू एजेंट्स आर द फाउंडेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जो डेवलपमेंट ऑफिसर कंटिन्यूसली रिक्रूट कर पा रहा है वही ग्रोथ कर पा रहा है, जो नहीं कर पा रहा है ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, ऐसा वो कहते थे। नीलेश साठे फॉर्मर MD ED, वो कहते थे रिक्रूटमेंट इज आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके भाषण में मैं सुन रहा था, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी का रिक्रूटमेंट है, ऐसा कह रहे थे। और मैं कम सैकड़ों ऐसा प्रोग्राम में अटेंड किया हूँ एज ए मैं पिछले 23 साल से NFI FWI के साथ जुड़ा हुआ हूँ और साथ में LIC के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और NFI FWI और LIC के वजह से मेरे बहुत सारे डिवीजन में, बहुत सारे जोन में, बहुत सारे ब्रांचेस में मेरे प्रोग्राम्स हुए हैं। कोई कह रहे हैं महेश कुंभार सब नो वॉइस, ऐसा आप लोगों को मेरे वॉइस सुनाई दे रहा है तो थम्स अप करिए। हाँ जी, महेश कुमार साहब, आपको अगर वॉइस सुनाई नहीं दे रहा तो आप YouTube चैनल में चले जाइए, NFI FWI का YouTube चैनल में। तो वहां पर NFI FWI एजुकेशन सीरीज में ये सेम टू सेम प्रोग्राम लाइव हो रहा है और ये रिकॉर्डिंग आपको वहां पर मिलेगा भी। तो हम लोग ये प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इतने सारे प्रोग्रामों में मैं जब स्पीकर बन के बैठा था तो कभी जोनल मैनेजर, कभी रीजनल मैनेजर, कभी सीनियर डिविजनल मैनेजर, कभी मार्केटिंग मैनेजर, कभी ब्रांच मैनेजर, कभी ABMS, ये सब डेवलपमेंट ऑफिसर लोगों से भाषण देते हुए मैंने काफी सारे बार सुना, रिक्रूटमेंट करिए, रिक्रूटमेंट करिए, रिक्रूटमेंट करिए, रिक्रूटमेंट करिए, रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे तो आपकी प्रगति नहीं होगा, रिक्रूटमेंट आपका ब्लड है, रिक्रूटमेंट आपका जॉब है, रिक्रूटमेंट आपके लिए जरूरी है, रिक्रूटमेंट सब कुछ है, रिक्रूट करो, रिक्रूट करो, रिक्रूट करो, रिक्रूट करो। हर आदमी बोलता था रिक्रूट करो, रिक्रूट करो, मगर मैंने आज तक किसी भी सीनियर मैनेजमेंट के लोगों को ये कहते हुए नहीं सुना कि कैसे रिक्रूट करें, किसको रिक्रूट करें, कहां पर रिक्रूट करें, रिक्रूट करते वक्त क्या बोले, रिक्रूट करते वक्त क्या दिखाएं, रिक्रूट करते वक्त क्या रणनीति अपनाएं, रिक्रूट करते वक्त कौन सी खास चीज का ध्यान रखें, रिक्रूट करते वक्त कैसे हम बर्ताव करें, रिक्रूट कहां पर करें, किधर करें, ये सब कोई नहीं बताता है। और वही सब जवाब आज इस कार्यक्रम में अगले 45 मिनट में मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। मजा आएगा, सीखने को मिलेगा और ये आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। तो आप लोगों को मेरी भाषा समझ में आ रहा है, बातें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो जरा सा थम्स अप करेंगे। और मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, आपको जब भी बात करना है ऐसा मेरे को हैंडशेक करेंगे तो मैं अनम्यूट करके आपसे बात करने का मौका दूंगा एंड आप मेरे को सवाल पूछ सकते हैं, जो भी जूम में है उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं, सब्जेक्ट में आते हैं। और सब्जेक्ट ऐसा है कि रिक्रूटमेंट आज का सब्जेक्ट है।
तीन, so this session is going to, we are going to learn about recruitment strategies, how to recruit anybody, anywhere, and everybody, everywhere with the master kit. ये हमारा, तो वेलकम अगेन। डीओ चैनल आज की तारीख में अपने कॉर्पोरेशन का एक लाइफ लाइन बन चुका है, तो बहुत ही बढ़िया ये चैनल के वजह से कॉर्पोरेशन को फायदा हो रहा है। एंड ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट ऑफिसर आज भी इस चैनल में रहते हुए बढ़िया जीवन बिता रहे हैं, कामयाबी हासिल कर रहे हैं, बढ़िया आईबी कमा रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को ये महसूस हो रहा है कि डीओ के बगैर ये संस्था नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत सारे सीनियर डीओ 60 की उम्र में जैसे रिटायर हो रहे थे, कॉर्पोरेशन ने कहा 5 और साल काम करिए, और 65 पहुंचते पहुंचते उनको कॉर्पोरेशन ने कहा और 5 साल काम करिए, और जब तक वो 70 के हो जाएंगे मुझे यकीन है कि कॉर्पोरेशन कहेगा और 5 साल काम करिए, और 5 साल काम करेंगे। 100 तक डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब को कोई खतरा नहीं है, मगर डेवलपमेंट ऑफिसर का मतलब है अगर परफॉर्मिंग डेवलपमेंट ऑफिसर है तो। और आज का कार्यक्रम परफॉर्मिंग डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के बारे में है, राइट। हम सब जरा सा एक बार रेस्पॉन्स के लिए, राइट। तो कैसे बन सकते हैं हम परफॉर्मिंग डेवलपमेंट ऑफिसर? ये शुरू होता है रिक्रूटमेंट के साथ। 3 डेवलपमेंट ऑफिसर की मैं कहानी बताना चाहूंगा। रमेश, आशीष, सुरेश, नाम बदल दिया है, मगर रमेश जो है ये इन्होंने कॉर्पोरेशन को 1991 में जुड़े थे, और आज वो 55 के। 91 में जुड़ने के बाद इनकी जो, रमेश जी की जो खास बात थी, ये बड़ा डायनामिक इंसान थे। कॉलेज में क्रिकेट की माहिर खिलाड़ी थे, और उसके बाद उनके बहुत सारे दोस्त थे, इनके बहुत सारे चाहने वाले थे। वो बहुत ही बड़ा फेमस पर्सन थे, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थे, लोगों के साथ बातचीत करने में, दोस्ती करने में इनका माहिर था, बिल्कुल आप लोगों की तरह। और इन्होंने जैसे कि 91 में रिक्रूट हो गए, पीडीओ बनकर एलआईसी में आए, उसके बाद उन्होंने सब लोगों को मिलकर, वो 2-3 महीने लग गया एजेंसी क्या है, डेवलपमेंट ऑफिसर का काम क्या है समझने के बाद। वो अपने ब्रांच के सीनियर लोगों को देखे, वो कैसा रिक्रूट करते हैं समझे, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद अपने कॉलेज के पुराने दोस्तों को, नए दोस्तों का लिस्ट बनाया, करीबन 200 लोगों को सबको मिले, उसमें से करीबन 60-70 लोग जुड़ गए। ऐसा हो के उन्होंने जबरदस्त एक टीम बना दिया, और ये टीम बढ़ता बढ़ता करीबन 110 का हो गया, और इस टीम में करीबन 20 क्लब मेंबर बन गए, और 2007 तक इस टीम के अंदर 4 एमडीआरटी भी बन गए। हर साल रमेश जी कम से कम 3 करोड़ रुपए से लेकर 3.5 करोड़ रुपए तक का प्रीमियम कर रहे थे। हर साल करीबन 4, 5, 6, 7 नए एड्रेस एजेंट्स जोड़ रहे थे, उतने एजेंट छोड़ के चले जा रहे थे। अब 2007-8 तक इनका टीम 110 का था, और 2015 तक इनका टीम करीबन 75 का हो गया, और 2022-23 में आज की तारीख में इनका टीम 50-56 के बीच में डगमगा रहा है। और पहले वो बड़े आसानी से 3.5 करोड़ का प्रीमियम कर पा रहे थे, आज की तारीख में इनका प्रीमियम जो है, एनुअल प्रीमियम इनके ऑर्गेनाइजेशन का 2.5 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ का भी ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है, ऐसा बढ़ रहा है। जब मैं रमेश जी से मिला था, नाम बदल कर बोल रहा हूं मैं, इनसे बात किया कि क्या हो रहा है आपके 3.5 करोड़ से अब 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ की तरफ बढ़ना चाहिए था, आपके साथ क्या हो रहा है, तकलीफ क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? तो बोलते हैं कि मैं नए लोगों को रिक्रूट नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। और मैं जब पूछा क्यों नहीं रिक्रूट कर पा रहे हैं, तो बोलते हैं कि अब जो लोग हैं वैसा नहीं रहे, अब वातावरण वैसा नहीं रहा। और उनसे बात करते हुए तो बोलते थे कि रमेश जी मुझे कहा कि 91, 92, 93, 94, 95, 96 में भारत बड़ा गरीब देश था, वो टाइम पर लोगों के पास नौकरियां नहीं थे, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगार हुआ करते थे, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, उनके पास जाना और एजेंट बन जाओ, जब तक तुम्हारे पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ना मिले तब तक एजेंट बन जाओ, ये जो हमारी कहानी था वो टाइम पर बढ़िया चला। और साथ में हम लोग न्यूज़पेपर में जरा सा भी छोटा सा ऐड डाल दिया, वॉक इन फॉर इंटरव्यू, तो 40-50 लोग इंटरव्यू के लिए आ जाते थे, उनमें से सेलेक्ट करके रिक्रूट करना बड़ा आसान होता था वो जमाने में। आज की तारीख में न्यूज़पेपर में ऐड डालो तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, आज की तारीख में फेसबुक में ऐड डालो तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता है। पहले नौकरी नहीं था तो लोग कुछ भी करने को तैयार है, आज नौकरी नहीं है ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को आउटडोर काम करना ही नहीं है, लोगों को टेबल के ऊपर बैठ के हर महीना 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमाना, ये आदत उनको पड़ चुकी है। एजेंसी आज की तारीख में उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा, और इसीलिए मैं रिक्रूट नहीं कर पा रहा हूँ, और ऐसा रमेश जी कह रहे हैं। तो ये बात, ये जो रमेश जी की दिक्कतें, तकलीफें, परेशानियां वो मेरे को बता रहे थे, इन परेशानियों के साथ आप भी सहमत हैं तो आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि हाथ उठाइए, हम सब दिखाइए भाइयों। कुछ लोग उठा रहे हैं, कुछ लोग नहीं उठा रहे। आइए आइए, पार्टिसिपेट करिए,
आई डोंट वांट दिस टू बी सिंगल एक वन साइडेड लेक्चर नहीं बनाते. थैंक यू स्वप्निल एंड स्वप्निल पाटिल जी. एंड हाँ, पीके श्रीवास्तव जी, आप भी एक बार थम्स अप करेंगे. इतना यस, एक मुस्कुराहट आपको बड़ा अच्छा लगा. दूसरा कहानी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ. काफी सारे लोगों ने थम्स अप किया. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. इसमें क्या है कि मेरे को भी जरा एक्साइटमेंट रहता है, जान आता है कि आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. राइट, थैंक यू. दूसरे जो थे ये है रमेश. दूसरा कहानी आशीष. 2004 में वो 2004-5 के बीच में वो पीडीओ बन के जुड़े. राइट, एलआईसी में जुड़े. 2007 में उनका कंफर्मेशन हो गया. उन्होंने भी करीबन 70-80 का टीम बना दिया और उनका भी बिजनेस बड़ा अच्छा होने लगा. एंड 2007 से लेके 2014-15 तक उन्होंने करीबन 70-80-100 लोगों का टीम बना दिया. और हर साल उसके बाद 2019 तक हर साल वो 12 लोगों को 15 लोगों को जोड़ रहे थे और 12 से 15 लोग हर साल छोड़ के भी जा रहे थे. आज आशीष का उम्र करीबन 41 है. आज भी वो बहुत कुछ करना चाहता है. बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही अग्रेसिव है, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी है. अपने टीम के लोगों को बढ़िया मोटिवेट करते हैं. हर सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, सारे मोटिवेशनल मीटिंग में जाते हैं, सारे किताबें पढ़ते हैं, यूट्यूब देखते हैं. जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते. मगर बड़ा डायनामिक होने के बावजूद इनका, आशीष जी का प्रॉब्लम ऐसा है कि रिक्रूटमेंट में पिछले 4-5 साल से कुछ बड़ा प्रगति नहीं हो पा रहा है. सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, आदमी टिक नहीं रहा है, नया रिक्रूटमेंट वापस नहीं हो पा रहा है. ये है आशीष जी के हालात. इनके भी हालात के साथ, इनके तकलीफों के साथ आप सहमत हो तो जरा सा थम्स अप करेंगे. एक हो गए रमेश जी, दूसरे हो गए आशीष जी, तीसरा एकदम नौजवान खिलाड़ी, ये है सुरेश. सुरेश जो है, आप अगर देखेंगे 2017 में 16-17 में वो एलआईसी में पीडीओ बन के जुड़े और इनके साथ साथ करीबन 7,000 लोग एलआईसी में जुड़े. वो 7,000 में से 5,000 आज नहीं है एलआईसी में. मगर ये पहले 3 महीने के अंदर जुड़ने के बाद पहले 3 महीने के अंदर ही करीबन 30 एजेंट बना दिए. और उसके बाद पहले साल में इन्होंने 55 एजेंट बनाया और उसके बाद इन्होंने 110 एजेंट बनाया दूसरे साल में. तीसरे साल तक ये करीबन 170 एजेंट बना चुके. और पूरे की पूरे हर प्रोग्राम में हर बार एलआईसी की तरफ से कोई भी कंपटीशन आए, एलआईसी की तरफ से कोई भी रिक्रूट करो, ये करो, कोई भी कंपटीशन में इनका नंबर 1 होते थे. ऐसा माना जाता था. बड़ा डायनेमिक, परफॉर्मिंग, जबरदस्त. और अगर इनको मिलो, आप बात करो तो हाँ करते हैं कि मैं साल का 100 लोगों को रिक्रूट कर दूंगा, 200 लोगों को रिक्रूट कर दूंगा. सब लोग ऐसा सोचते हैं. आज वापस सुरेश की जो टीम है वो करीबन 55-60 की तक पहुंच गया है. 180 तक गया था, 55-60 में पहुंच गया है. और सुरेश को डर है कि ये टीम में परफॉर्मर बहुत कम है. 1 करोड़ 1.25 करोड़ का बिजनेस होता है, कोई भी क्लब मेंबर नहीं है. एक आदमी 1 साल एमडीआरटी हुआ था, उसके बाद वो भी एमडीआरटी नहीं कर रहा है. ये सुरेश जी की हालत है. आज मैं जब ये तीनों के साथ अलग अलग सिटी में जाकर मिला और उनसे बात किया कि क्या हो रहा है आपके जीवन में, क्यों ये चुनौती है, क्या चुनौती है, तो बोलते हैं कि सबके सबका एक ही बात है. वो करना चाहते हैं 100 का रिक्रूटमेंट, वो करना चाहते हैं 50 का रिक्रूटमेंट, वो हर वो चीज करना चाहते हैं जो मुमकिन है. मगर रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है. तो जब मैं इनसे बात करके वापस आ रहा था और मैं फेडरेशन के साथ बात करके प्रोग्राम कर रहा था, तब मैंने कुछ कुछ एनालिसिस किया कि क्यों आज डेवलपमेंट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट के इतने चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, चुनौती का सामना कर रहे हैं. क्या चैलेंज क्या है, रिक्रूटमेंट का प्रॉब्लम क्या है. आप में से कोई भी मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हाथ दिखाइए. मैं 1-2 मिनट आप में से इंटरेक्शन करके वापस मैं मेरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर रिक्रूटमेंट की चुनौतियों के बारे में कुछ भी अगर आप बताना चाहते हैं. एक बार किसी न किसी की आवाज सुन लेने से ना एक उत्साह आ जाता है. एनीबॉडी, हाथ ऐसा दिखाइए स्क्रीन के सामने. मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. क्या चुनौतियां है रिक्रूटमेंट, क्यों रिक्रूटमेंट चैलेंजिंग है. यस, यहाँ पर हाँ जी, आपका नाम लिखाई नहीं दे रहा है मगर मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूँ. Xiaomi M20 2012. हेलो. हाँ जी, हेलो सर. बोलिए बोलिए. नमस्कार सर. नमस्कार. हाँ सर, जो मैं फील्ड को जाता हूँ,
हेलो सर, मेरा आवाज हाँ आ रहा हाँ, है सुनाई सर? दे रहा है, सुनाई दे रहा है, बात करिए। को जा रहा हूँ तो आप फील्ड को जाते हैं, नहीं आवाज बंद हो गया वापस। हाँ, मैं जब रिक्रूटमेंट बारे में बोल रहा हूँ, एजेंसी कैनवासिंग जब कर रहा हूँ, तब लोग मतलब वो जो प्रोफेशन को अ, बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं। बोलते हैं कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, ये तो लोगों को के पास जाओ, उनका मतलब उनको बहुत बार कहने पर वो पॉलिसी करेंगे, वो सब नहीं कर पाएंगे हम। बहुत उससे खूब। ज्यादा अच्छा आपका होगा नाम कि क्या है और कहाँ के हैं आप? मैं आशीष कुमार महांती, नीमापड़ा ब्रांच, भुवनेश्वर डिवीजन, उड़ीसा में हूँ। ओके ओके, उड़ीसा से। बहुत बढ़िया। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, यश पंड्या आप बोलिए। हाँ सर, हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए कोई एजेंट को जाते हैं तो उसको कमीशन स्ट्रक्चर वगैरह समझाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, हमें वो लोग दूसरे एजेंट जो होते हैं उनसे राय लेते हैं कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं। तो वो लोग गलत सलत सलाह दे लेते थे कि ये तो अच्छा काम नहीं है, हमने तो पहले से पकड़ रखा है, फिर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन इसलिए वो चला रहे हैं। वैसे वो दूसरे पुराने एजेंट ही एजेंट को नेगेटिव कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। यस, आई मैं कंप्लीटली एग्री। गुजरात से भावनगर डिवीजन। हाँ जी, आपका नाम भी बता दीजिए। हाँ, यशपाल पंड्या, यशपाल पंड्या, बहुत गुजरात बढ़िया। से भावनगर डिवीजन। बहुत बढ़िया यशपाल जी, बढ़िया बात बोला आपने। थैंक यू एंड आई कंप्लीटली एग्री। रमेश कुमार पोद्दार जी, आप अगर बात करना चाहते हैं तो अनम्यूट किया है, आप भी बोल सकते हैं। नमस्कार सर। मैं झंझारपुर ब्रांच के मुजफ्फरपुर डिवीजन से हूँ सर। मुझे एक चैलेंजिंग ये लग रहा है, अभी जो भाई साहब बोल रहे हैं इससे हम 1% सहमत हूँ। दूसरा मुझे ये चैलेंज लग रहा है करके सेगमेंट को मैं चूज करूँ, वो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड यूथ को इसमें लाओ या ऑलरेडी किसी न किसी प्रोफेशन में जुड़ा हुआ है वो लाओ, ये मुझे कंफ्यूजन है। काइंडली ये डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपकी आधा बात हमको सुनाई नहीं दिया, मगर आप जो कहना चाहते हैं वो मैं समझ गया। ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं उनमें अनम्यूटेड मतलब अनएम्प्लॉयड लोगों को मैं रिक्रूट नहीं, करूं, या आदमी सेगमेंट जो ऑलरेडी सक्सेसफुल। या ऑलरेडी किसी न किसी प्रोफेशन में जुड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास कुछ ऐसे हाँ, बहुत कोई सारा नौकरी कर रहा है, पेंडिंग कोई स्टूडेंट बिजनेस है कर रहा है, जो कोई वो। वो इवन एग्जाम के लिए भी बिल्कुल। रेडी नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सारा दूसरा भी अपॉर्चुनिटी है। और अनएम्प्लॉयड को भी मैं बहुत सारा लाया हूँ, तो अनएम्प्लॉयड को सोशल स्टेटस है नहीं, तो उससे पॉलिसी प्रोक्योरमेंट में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये मुझे समझ नहीं आता है। तो काइंडली ई डॉट को थोड़ा क्लियर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ, 3 लोगों से हमने बात की, मेरा खुशनसीबी है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ये कार्यक्रम में 3 लोगों से बात कर पाना भी बहुत ही खुशनसीबी की बात है, बढ़िया बात है। थैंक यू सो मच रमेश कुमार पोद्दार जी। आपने जो कहा कि नंबर 1, मैं मेरे बहुत सारे लोग जो है ये एजेंसी लेने को तैयार नहीं होते हैं, और जो तैयार होते हैं वो उनके पास ऑलरेडी उन कोई ना कोई ऑक्यूपेशन होता है। तो मैं जॉबलेस को मैं रिक्रूट करूं, या जॉब जो कर रहा है उसको रिक्रूट करूं, या ऑलरेडी, या इट सीम्स सम सीम्स, अरे यार कोई कुछ लिख के बता रहे थे, some seems the agency type of work is mean work, so keep the priority last, if anything is not exist then only okay। तो ये कोई कह रहे हैं कि JN वाधवाना साहब कि ये एजेंसी जो है छोटा काम लगता है, और ये छोटा काम लगने के वजह से लोगों को ये काम करने को तैयार नहीं होते हैं। दूसरा कोई भी काम नहीं मिला तो ही ये लास्ट में रखते हैं, करते हैं। ये सभी के सभी जो भनगे राजेंद्र साहब बोल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग फॉर रिक्रूटमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू रिक्रूट फॉर लास्ट 5 years, 5 साल से मैंने रिक्रूट नहीं किया, ऐसा भनगे साहब बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो क्यों रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, क्यों रिक्रूटमेंट कर नहीं पा रहे हैं? अभी अभी रमेश कुमार पोद्दार जी ने जो कहा, यश जैन ने जो कहा, ये सबको अगर मैं एनालाइज करूं, मैं इसको सिंप्लीफाइड एक ऐसा प्रोफेशनल लैंग्वेज में पेश करूंगा, जो लैंग्वेज में पेश करने पर हमको रिक्रूटमेंट के एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आएगा। राइट? एक्चुअल रिक्रूटमेंट का एक्चुअल प्रॉब्लम ये कौन है भाई? ऐसा है, डेवलपमेंट ऑफिसरों को कभी भी रिक्रूटमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कभी मिला नहीं।
ये आज का रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ी जान। उन लोगों को 2 महीना 3 महीना इंडक्शन ट्रेनिंग तो मिला, मगर उस इंडक्शन ट्रेनिंग में उनको दुनिया भर के बातें कह दिया गया, सब बातें बताया, मगर रिक्रूटमेंट कैसे करना कभी किसी को नहीं बताया। एज ए रिजल्ट आज डीओ के पास रिक्रूट करने का चाहत है, रिक्रूट करना चाहता है, रिक्रूटमेंट के लिए मेहनत करना चाहता है, मगर उसको उसके पास कोई ना कोई स्क्रिप्ट है, उसके पास ना कोई प्रेजेंटेशन है, ना उसके पास ना कोई स्ट्रेटेजी है, ना उसके पास कोई मटेरियल है। आज डेवलपमेंट ऑफिसर एक ऐसा सिपाही बन के देश का सुरक्षा कर रहा है, जिस सिपाही के पास सामने से युद्ध करने के लिए दूसरे सिपाही के पास सब कुछ है, मगर इसके सुरक्षा के लिए इसके पास कोई भी हथियार नहीं है, औजार नहीं है, ना चाकू है, सिर्फ लकड़ा पकड़ के वो युद्ध कर रहा है, वो उसका हालत है। मगर आज हमारे सिपाही, डेवलपमेंट ऑफिसर सिपाही के पास होना चाहिए AK-47, AK-56, जिसको पकड़ के वो दुश्मन के साथ सामना करे। ऐसा कोई भी औजार उसको कभी भी दिया नहीं गया। और आपके पास अगर इस प्रकार का औजार आ जाए तो आप हर साल 100 से 200 एजेंट बड़े आसानी से रिक्रूट कर पाएंगे। तो नंबर 1, आपको औजार नहीं मिला। नंबर 2, आपको कभी भी सही रास्ता नहीं सिखाया गया। नंबर 3, आपको सही मार्ग में कैसा रिक्रूटमेंट का स्क्रिप्ट क्या होता है, आप जाइए ये बोलिए, आप जाइए ऐसे बात करिए, इस आदमी से ऐसा बात करिए, उस आदमी से ऐसा बात करिए, इस प्रकार का कभी भी डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ नहीं हुआ है। नतीजा आज रिक्रूटमेंट के लिए सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम किस प्रकार से अलग होगा? आज का हमारा प्रोग्राम इस प्रकार से अलग होगा कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रिक्रूटमेंट करते वक्त स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजिस्ट क्या होना चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, ये सब के सब एजेंट रिक्रूटमेंट के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। राइट? जैसा वो ओडिशा का भुवनेश्वर का आदमी लड़का वो बोल रहा था कि मेरे पास जो है लोग तैयार नहीं होते हैं, और वो रमेश कुमार पोद्दार बोल रहा था वो लोग जो है जुड़ते हैं वो लोग तो एग्जाम के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। और तीसरा आदमी वो बोल रियाश पंड्या, आप में से कौन क्या बोला था मेरे को याद नहीं है, मगर आप बोल रहे थे कि लोग जो है रेडी नहीं हो रहे हैं, क्या बोलने का पता नहीं है, एग्जाम पास होने के लिए तैयार है, पार्ट टाइम और फुल टाइम में किसको मैं रिक्रूट करूं। दीज आर द चैलेंजेस। ऐसा मैं कहूंगा कि एजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए अपने पास स्क्रिप्ट अलग अलग होना चाहिए। क्यों स्क्रिप्ट अलग अलग होना चाहिए? क्योंकि बीमारी अलग, दवा अलग। कैंसर की दवा अलग है, हार्ट अटैक की दवा अलग है, लिवर की अलग है, किडनी की अलग है, सर दर्द की अलग है, पेट दर्द की अलग है। कैंसर की दवा आपको किडनी में काम नहीं आएगा, किडनी की दवा लिवर में काम नहीं आएगा, लिवर की दवा हार्ट अटैक में काम नहीं आएगी। उसी प्रकार से लोग जो है एजेंसी को समझ पाने के मामले में लोग अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नौकरी करना पसंद है, उनको एजेंसी को नौकरी वाला भाषा में बोलने से ही समझ में आएगा। कुछ महिलाएं होते हैं जो वो सारा जिंदगी उनके पास आजादी नहीं मिला है, उनको लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपनों को पूरा करने का कोई मार्ग नहीं मिला है, तो एजेंट महिलाओं के पास जाकर एजेंसी प्रेजेंट करते वक्त जॉब के बेनिफिट बताने से नहीं चलेगा, महिलाओं को इमोशनली टच करने वाले बेनिफिट बताना पड़ेगा। आप किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, उनको प्रॉफिट, उनको इन्वेस्टमेंट, उनको कितना घंटा काम करना पड़ेगा, कैसे काम कर, उनको वो भाषा में बताने से समझ में आएगा। यानी प्रोस्पेक्ट जैसा बीमारी अलग तो दवा अलग, उसी तरह प्रोस्पेक्ट के अलग होते होते हमारे पास समझाने का स्क्रिप्ट अलग होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, पिछले 22 साल से NFIFWA के साथ में जुड़ा हूं, LIC के डेवलपमेंट अफसरों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, और इस ट्रेनिंग के नतीजा मैंने बनाए हैं किट। राइट? इस किट को आप देख सकते हैं, ये किट मैंने बनाई, ये एजेंट रिक्रूटमेंट के लिए आपका AK-47 है, AK-56 है, लक्ष्मी बॉम्ब है, ये आपके पास किट है। इस किट के अंदर क्या है, 12 अलग अलग सेक्शन है। ये 12 अलग अलग सेक्शन क्या करता है, अलग अलग लोगों को रिक्रूट करने के लिए अलग अलग सेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नौकरी करने वाले आदमी के पास जाते हैं, उसको कौन सी बातें समझाने से वो एजेंट बनने को तैयार हो जाएगा, वो सारी बातें इसमें लिखा है। उसको कठपुतली वाली बात करने का कि आपको जीवन में कठपुतली नहीं बनना है, आपको जो वर्क का प्रेशर है, आपके बॉस के जुल्म जो है, आपको घर में रोज सुबह का भीड़ है, बस ये सब के सब भाषा
जो जॉब में उसके दिक्कतें, तकलीफें, परेशानियों को एजेंसी कितना बेहतर तरीके से ओवरकम करते हैं। एजेंसी में सिर्फ सैलरी नहीं मिलता है, मगर एजेंसी में जो कमाई है जॉब से बहुत ज्यादा है। ये चीज उसको समझा पाना चाहिए। इतना अगर समझा दिया तो हर नौकरी करने वाला आदमी आपके पास एजेंट बनने को तैयार हो जाएगा। उसी तरह आप अगर किसी महिला के सामने जाते हैं तो महिला को यह समझाने से वो समझ में नहीं आएगा। महिला को समझ में आने वाली भाषाएं और बातें, ये मौका, ये सब अलग है। उनकी इमोशंस अलग है, उनको समझ में आने वाली इलस्ट्रेशंस अलग है। तो महिलाओं को ये सब बताने से वो तैयार हुई। ये नौकरी करने वाला या महिला है तो बिजनेसमैन, व्यापारी या दुकानदार आदमी को क्या दिखाने से, क्या समझाने से वो तैयार होगा। ये रिटायर्ड पर्सन क्या दिखाने से, क्या इलस्ट्रेशन समझाने से तैयार होगा। आप चाहो तो मुझे कोई एक दिखाने को बोलेंगे तो मैं 2-3 आपको दिखाने को भी तैयार हूँ, उसके अंदर क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन क्या होता है। प्रोफेशनल आदमी को, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, उनको क्या समझाने से वो किस तरह से मान जाएंगे। कपल को क्या समझाने से वो मान जाएंगे। ऐसा इस किट के अंदर 12 सेक्शन है। ये 12 अलग अलग लोगों को समझाने का 12 अलग अलग तरीका। कहते हैं 4 लेवल्स होते हैं सेलिंग का। पहला लेवल को कहते हैं आस्किंग लेवल। आस्किंग यानी मांगना। तो आप किसी के पास जाते हैं, उसको मांगते हैं, सर एजेंट बन जाओ ना प्लीज, मांगने जैसा, भीख मांगने जैसे एजेंसी बनने को बोल रहे हैं। दूसरे लेवल को कहते हैं टेलिंग। टेलिंग मतलब बोलना। तो आप ये बनेंगे तो एजेंट बन जाएंगे, तो आपको ग्रेचुइटी मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा, आपको रेन्यूअल मिलेगा, आपको ये सब बोल रहे हैं। बोलते वक्त वो सुन रहा है तो दिमाग काम नहीं करता है। आप अगर एजेंसी के आस्किंग लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे तो 100 में से 2 लोग तैयार हो। आप अगर टेलिंग लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे तो 100 में से 5 लोग तैयार हो। तीसरा लेवल को कहते हैं सेलिंग लेवल, यानी बेचना। तो बेचने के लेवल पर आप रिक्रूट करेंगे तो 100 में से 10 से 20 लोग तैयार हो। चौथा लेवल को कहते हैं एडुकेटिंग। एडुकेटिंग का मतलब है सिखाना। ये करेंगे तो 100 में से 200 लोग तैयार होंगे, क्योंकि एजुकेशन में ना सिर्फ आदमी जुड़ जाता है तुरंत, वो 10 लोगों को और भी आपके बारे में बताता है कि देखिए जाइए रमेश कुमार पोद्दार के पास एजेंट बन जाए, बहुत बढ़िया चीज। तो हम लोगों को आज एजेंसी कौन सा लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहिए। ये 4 लेवल में से क्या हम लोग आस्किंग लेवल पे प्रैक्टिस करने से कामयाब होंगे, टेलिंग लेवल पे प्रैक्टिस करने पे कामयाब होंगे, सेलिंग लेवल पे प्रैक्टिस करने पे कामयाब होंगे, या एजुकेटिंग लेवल पे प्रैक्टिस करने से कामयाब होंगे। हम कामयाब होंगे एजुकेटिंग लेवल पे। हमको LIC में जो कुछ सिखाया गया आस्किंग और टेलिंग लेवल की बातें हैं, ये बड़ा बेअसरदार बातें हैं। आप एजेंट बनाने के लिए जब किसी के सामने जाते हैं ना, उसको एजेंसी का बेनिफिट समझाते हैं। और कोई अभी कह रहा था एजेंसी के बेनिफिट्स इतने निम्न होते हैं, इतने तुच्छ होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो समझाने पर आज नए पीढ़ी के लोग एजेंट बनने को तैयार नहीं होते। मेरी बातें आपको समझ में आ रहा है? जरा थम्स अप करेंगे प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। बहुत ही खूबसूरती से आप लोग तुरंत मेरे को जवाब दे रहे हैं। मैं आप में से किसी एक के साथ एक रोल प्ले करना चाहता हूँ। ये रोल प्ले में आप मेरे को रिक्रूट करने का 2-5 मिनट कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं भी आपको रिक्रूट करने का 2-5 मिनट कोशिश करूंगा। उसमें हम सबको सीखने का एक बड़ा जबरदस्त मौका मिलेगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट जैसा करेंगे। तो कौन मेरे साथ रिक्रूट करने के लिए मेरे को, हाँ, गणेश घोने साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने इनिशिएटिव लिया। आप अनम्यूट करिए। हम दोनों का मकसद यही है कि हम ये प्रोग्राम से कुछ सीखें। मैं आपसे कुछ सीखूं, आप मेरे से कुछ सीखें। गणेश घोने साहब प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा। हाँ जी। कि 28 साल से एक प्रोफेशन में हूँ, जो प्रोफेशन ऐसा मौका देता है कि बहुत अच्छे पर्सनालिटी वाले लोगों को एक प्रगति की दिशा में ले जाए। आपको देख के, आपकी पर्सनालिटी देख के मुझे बिल्कुल ये एहसास हो रहा है कि मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूं जिससे एक अच्छा प्रगतिशील पथ आपके सामने आ जाए। बेसिकली 3 चीजें मुझे आपके बारे में बहुत अच्छी लगी। आपकी बात करने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस, और आपका बेसिकली
जो प्रेजेंटेशन है खुद का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छा आर्थिक प्रगति दे सकती है अगर आप मुझसे जुड़ जाओ। मैं जुड़ने को तैयार हूँ, बताइए क्या करूं। सी बेसिकली ऐसा कोई बोलता नहीं है, मगर मैं आगे बढ़ने के लिए आपके बातें मेरे को भी Yes, अच्छे लगे, yes. बोलिए। इसमें सर एक चीज है कि लोगों की जरूरत और हमारी क्षमता, ये दोनों अगर एक साथ जुड़ जाए तो एक बहुत बड़े अच्छे व्यवसाय का निर्माण हो जाता है। लोगों की जरूरतों की नब्ज समझ के अगर हम हमारी क्षमताओं को उस दिशा में ले जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ जाती है। वही अपॉर्चुनिटी आज के ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपको मिल जाती है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन के साथ आप जुड़ जाओ कि जो ऑलरेडी बहुत बड़ा ट्रस्टेड ब्रांड है, तो आपका इसमें सर्वाइवल, केवल सर्वाइवल नहीं, बहुत अच्छी प्रगति करना सुनिश्चित है। और ये एकमेव ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आप मेहनत एक बार करने के बाद आपको पूरे यानी इतना लंबे समय तक आपका उत्पन्न या आय चलता रहेगा। ये खाली अपने खुद के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के, यानी एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसमें तीनों बेनिफिट मिल जाते हैं। आपको आपके व्यवसाय के प्रति एक व्यावसायिक कौशल्य दिखाने की अपॉर्चुनिटी, अपनी खुद की ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी, और साथ ही में लोगों का भला करने की एक अपॉर्चुनिटी। और ये तीनों बेनिफिट्स एक साथ अगर आपको मिल जाए ना, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप एक अच्छे मुकाम पे तो रहोगे ही रहोगे, साथ में लोगों की या समाज भावना की इसमें भी आप बहुत बढ़िया काम कर पाओगे। द डे यू विल फाइंड योरसेल्फ अ सक्सेसफुल वन, अ सक्सेसफुल इन रियल सेंस। सर इधर तक रुकने के बाद थोड़े आंकड़े चालू हो जाते हैं, क्योंकि इधर फिलोसॉफी हो जाता है, आंकड़े शुरू हो जाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आपको, मैं शाबाश। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा गणेश घोने साहब, आपने फिलोसॉफिकल बोला, बढ़िया है। एंड मुद्दे पे नहीं आया मेरे को वो एक है, मगर आंकड़ा बोल के आपने मेरे को बता दिया कि जब कभी आप किसी के सामने जाते हैं आंकड़ा बताते हैं, दिखाते हैं। चलिए, हम लोग इस जो बातें आपने कहा उसमें मुझे समझ में ये आया, गणेश घोने साहब बहुत ही काबिल है, बहुत ही सक्षम है आप, और बहुत ही क्लियर आपका कम्युनिकेशन है। जो कुछ बोलना चाहते हैं वो बोलने की काबिलियत आपके अंदर, बहुत हुनर बढ़िया है। आपको अगर सही प्रशिक्षण, सही औजार सही तरीके से मिले, आप कमाल कर सकते हैं, ये भी नजर आ रहा था। चलिए, मैं अभी डेवलपमेंट ऑफिसर बनता हूँ, आपको मैं कैनवास करता हूँ, रिवर्स करते रोल को, ये अच्छा रहेगा। तो जब भी मैं आपको मिलूंगा, मैं आपको गणेश घोने साहब नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर है। नमस्कार। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। गणेश जी, ये एमडीआरटी एजेंसी इंफॉर्मेशन नाम का किट है जो एलआईसी में नया नया आया है। इसको दिखाने में करीबन 15 मिनट समय लगता है। कल दिखाएं, परसों दिखाएं, कब दिखाएं बताइए? अभी दिखा सकते हैं सर? ये दिखा सकते हैं ना, अभी दिखा सकते हैं। ये सुनने के लिए हमको वो बोलना पड़ता है, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं एलआईसी में डीओ हूं नहीं, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट अफसर का नौकरी करता हूँ। एलआईसी का एक नया किट आया है, एमडीआरटी एजेंसी किट। इसको देख रहे हैं, इसको यहाँ पर लाके दिखाने में 15-20 मिनट समय लगता है। कल दिखाऊं कि परसों, इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। ऐसा हमको बोलना है, इसको मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए यहाँ पर बोल दिया। तो गणेश जी थैंक यू। जैसा आप एलआईसी एजेंसी नाम सुना होगा, उसी का ये बड़ा भाई है। जैसे पुलिस में कांस्टेबल भी होता है, इंस्पेक्टर भी होता है, जनरल भी होता है, ऐसे ये जरा बड़ा भाई है। ये एक नया चीज एलआईसी ने लॉन्च किया, एमडीआरटी एजेंसी। गणेश जी, आप जब एमडीआरटी एजेंट बनते हैं तो आपको 6 बेनिफिट मिलता है। आगे बढ़ो। जरूर सर। पहला बेनिफिट गणेश जी, एमडीआरटी एजेंसी आपको सालाना 12 लाख कमाई देती है। इसका मतलब अब पहले महीने से तकरीबन लाख रुपए कमाने लगे। राइट? एलआईसी के अंदर गणेश जी 4 प्रकार की एजेंसी होती है। एक होता है नॉर्मल एजेंसी, आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। सुनाई दे रहा है? यस सर। नॉर्मल एजेंट जो है महीने का 17,000 अप्रोक्सीमेटली और सालाना 2 लाख कमाता है। दूसरा होता है एमडीआरटी एजेंसी, महीने का लाख रुपए, सालाना 12 लाख कमाता है। तीसरा होता है सीओटी एजेंसी, चौथा होता है टीओटी एजेंसी। मैं आज आपके साथ साधारण नहीं एमडीआरटी एजेंसी की बात कर रहा हूं। दूसरा बेनिफिट, ये हो गया पहला बेनिफिट गणेश जी। दूसरा बेनिफिट, एमडीआरटी एजेंसी आपको हर साल यूएसए जाने का मौका देती है, विदेश यात्रा के।
आप एमडीआईटी में आप खुद जा सकते हैं, टीओटी एजेंसी लेवल में आप अपनी पत्नी के साथ जाकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरी बात, गणेश जी, तीसरा बेनिफिट एमडीआईटी एजेंसी का ऐसा है कि एमडीआईटी एजेंसी आपको रिन्यूअल कमीशन देती है। ये एक प्रकार की पेंशन है। अब गणेश जी, लोगों को पेंशन कब मिलता है? एक डेडिकेटेड सर्विस आप जब बहुत सालों तक देते हैं तभी आप एलिजिबल होते हो पेंशन के लिए। तब आप एक नौकरी करते हो, 25, 30, 35 साल खत्म होने के बाद एक रिटायरमेंट का एज आता है, उसके बाद आपको हर महीना पेंशन मिलता है। ये बात बोल रहे हैं आप? सही बात। अब एमडीआईटी एजेंसी में आपको पेंशन दूसरे साल से स्टार्ट हो जाता है। देखिए, एमडीआईटी एजेंसी में 1 साल बाद आपको जीवन भर हर महीना मिलने वाला है 15,000 पेंशन। 2 साल बाद ये हो जाता है आपका, पढ़ के देखिए कितना है। सर विजिबल नहीं है इधर से। देखिए देखिए, 30,000 रुपया। बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल बाद आपका पेंशन हो जाएगा 70,000, 75,000, 75,000। 10 साल बाद 1,50,000 सर, एंड 30 साल बाद 4,50,000। ये एमडीआईटी की आप इतने साल के बाद कितना पेंशन होएगा। ये बेनिफिट नंबर 3 है। चौथा बेनिफिट है गणेश जी कि एमडीआईटी एजेंसी आपको हेरिडेटरी कमीशन देती है। हेरिडेटरी कमीशन का मतलब, आप समझो 10 साल काम किया तो आपका पेंशन कितना आना है? 1,50,000। ये 1.5 लाख रुपया गणेश जी आपके बाद, आपको तो मिलेगा ही, आपके बाद आपकी स्पाउस को यानी पत्नी को मिलेगा, आपकी पत्नी के बाद बच्चों को मिलेगा। दिखाई दे रहा है आपको? सही बात। आपके बच्चों के बाद आपके नॉमिनी को मिलेगा। ये पैसा आपको सदियों तक मिलता है। 5वां बेनिफिट है, एमडीआईटी एजेंसी आपको गाड़ी खरीदने का मौका देती है। तो 5 लाख और 30 लाख, एमडीआईटी में 5 लाख और सीओटी में 30 लाख का गाड़ी इंटरेस्ट फ्री मिलता है। और छठा बेनिफिट है, एमडीआईटी में आपको अपने सपनों का मकान खरीदने का मौका मिलता है। एमडीआईटी लेवल में 25 लाख और टीओटी लेवल में 1 करोड़। तो ये मेन टोटली 60 बेनिफिट है एमडीआईटी के गणेश जी। मैं आपको जो दिखाया प्राइमरी 6 बेनिफिट है। तो गणेश जी बताइए, 6 में से आपको कौन सा पसंद आया? ये जो पेंशन वाला चीज है ये बहुत अच्छा लगा सर। बहुत ही बढ़िया सा सलाम। मुझे लगा कि आपको वही पसंद आएगा, क्योंकि जो भी डायनामिक फैमिली मैन होता है ना, उसको वही पसंद आता है। उसका कारण क्या है? आपको वही पसंद आने का कारण क्या है? किसी भी आदमी को स्थिरता की आवश्यकता रहती है और ये स्थिरता देने की कोशिश है। ये स्थिरता दे सकता है। बहुत बढ़िया। तो क्यों ना आप एजेंट बन जाओ, एमडीआईटी एजेंट। जरूर सोचूंगा सर। तो आगे बढ़ते हैं, फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। आपको स्थिरता तो चाहिए ना? चाहिए जरूर। ये तो मिल रहा है यहाँ पर, ये तो ऑफिशियल है, तो आप कर लीजिए कल से। जरूर सर। तो ये हो गया कोशिश, राइट। आपने जो कहा था, एक कहानी कहा था, मैंने क्या किया, कहानी बोला और वो कहानी को एविडेंस के साथ दिखाया, प्रेजेंटेशन कर दी। ये आपको प्रोफेशनल बनाता है। आप अभी जो है मेरे साथ प्रोग्राम में है, मैं ट्रेनर हूं, तो एक रिस्पेक्ट के वजह से आप मेरे को मान गए। मगर आप जब अलग अलग लोगों को मिलेंगे तो इतने आसानी से लोग मानते नहीं गणेश जी। 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, ओके ना? तो जो आप मतलब, मैं खुद जाकर लोगों के साथ, डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ ये दिखाकर जब रिक्रूट किया, 3 अलग अलग सवाल मुझे लोगों से मिला। पहला सवाल लोग पूछते हैं, ये साधारण एजेंसी और एमडीआईटी एजेंसी में फर्क क्या है? तो वो जो सवाल का जवाब है हम अगले पेज में देते हैं कि किस तरह एमडीआईटी एजेंसी साधारण एलआईसी एजेंसी से अलग है। तो एमडीआईटी साधारण एजेंसी के और एमडीआईटी एजेंसी और बातें हैं, ये सब के सब ये अलग अलग चीज दिखा दिया। दूसरे सवाल पूछते हैं लोग कि करना क्या होगा। तो हम लोग 1-2 मिनट के लिए फिर से रिवर्स कर लेते हैं। आप डीओ, मैं प्रोस्पेक्टिव एजेंट, समझो वापस आप डीओ बनिए। गणेश जी, मुझे करना क्या होगा बताइए। मैं एजेंट बनने को तैयार हूं, मुझे करना क्या होगा? सर जी, आप जब भी एजेंसी प्रोफेशन एक्सेप्ट करोगे तो सबसे पहले आपको लोगों को एजुकेट करना है, काउंसिल करना है, लोगों को उनकी जरूरत के बारे में एहसास दिलवाना है। और ये करने के बाद उनका जो उनकी तैयार होने के बाद, कि उन्होंने तैयारी जताने के बाद, आपको वो प्रोसेसिंग वर्क जो है उनका, वो प्रोसेसिंग वर्क कंप्लीट करके एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल की तरह उनको आफ्टर सेल सर्विस भी देना है। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार।
तो हम लोग इसको प्रोफेशनलाइज करते हैं। जब आप एजेंट है, मैं डीओ, रोल रिवर्सल, ये जो हम दोनों के बीच में बात हो रहा है और सब लोग देख रहे हैं गणेश जी, तो बहुत ही खूबसूरत बात हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें हम चर्चा कर रहे हैं, राइट ना। तो गणेश जी, मैं अभी डीओ हूँ, आप एजेंट हैं, आप मेरे को पूछिए करना क्या होगा। सर करना क्या होता है इसमें? बहुत ही बढ़िया सवाल। तो ये जो सवाल है आप मेरे को पूछ रहे हैं क्या करना होगा। तो गणेश जी, एलआईसी एजेंसी के करियर में आपको 4 फेजेस आते हैं, 4 स्टेजेस। हर फेज में आपका काम अलग होगा। पहला जो फेज है उसको कहते हैं शुरुआती कामयाबी और संकल्प का समय। ये आप जुड़ने के बाद आने वाले पहला 18 महीना है। आपको दिखाई दे रहा है गणेश जी? यस सर, यस ये सर। 18 महीने के दौरान आपका काम है दिखाना। अब देखिए जरा, और क्या दिखाना? लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाना। किसको दिखाना? जरा पढ़ के दिखाइए। सर ये थोड़ा एलिजिबिलिटी कम आ रहा है आपका। हर दिन 10 लोगों को, हर हफ्ते 50 लोगों को, हर महीना 200 लोगों को, हर साल 2000 लोगों को। बस जैसा मैं आपको ये किताब दिखा रहा हूं गणेश जी, आपका काम है इसको लाइफ स्टाइल, देखिए जरा, इसको लाइफ स्टाइल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये मेरा काम है। आपको लोगों को ये दिखाना, ये आपका काम है। डेली 10 को दिखाना है। किसको दिखाना हम बता देंगे, कैसा दिखाना हम आपको बता देंगे, ये जुड़ते जुड़ते हम आपको दिला देंगे। आपका काम है डेली 10 को दिखाना, महीने में 200 को दिखाना। इतना करते करते लाख रुपए महीने का कमा लेंगे। अब ये आपका काम है फेज 1 में। 18 महीने के बाद आप पहुंचेंगे फेज 2 में। फेज 2 का नाम ये है। इस वक्त आपका काम अगला 36 महीने ये होगा आपका काम। उसके बाद तीसरा फेज आ जाएगा, वहां पर आपका काम ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा चौथा फेज, उस वक्त आपका काम ये हो जाएगा, राइट। तो 3 सवाल है गणेश जी लोग जो पूछते हैं। पहला है एलआईसी और एमडीआरटी के बीच में फर्क क्या है। दूसरा सवाल है कि करना क्या होगा। तीसरा जो है सबसे डेंजरस सवाल है, लोग बोलते हैं एमडीआरटी बनना इतना आसान है क्या, राइट। जो जेन्युइन प्रोस्पेक्ट्स है वो सब पूछते हैं। तो हम बोलते हैं सर आसान है या नहीं है, इसका फैसला आप करिए। मैं आपको सिर्फ दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं? मैं आपके साथ गणेश जी, एलआईसी का पिछले साल 16,500 जो एजेंट एमडीआरटी बने थे उन सबका लिस्ट। ये प्रैक्टिकल सचमुच का लिस्ट है। मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो है भारत की टॉप एजेंट का नाम, फोटो, ये बाद में देखते हैं हम लोग। देख रहे हैं? ये सब एलआईसी के एजेंट लोगों का नाम है। एजेंसी कोड है, एजेंट का नाम है, जोन है, डिवीजन है, ब्रांच है, प्रीमियम है और कमीशन है। जिसका मतलब है ये सब जो है पिछले साल जो एमडीआरटी बने हैं उनका नाम और पता है। और ये सब भी पिछले साल का एमडीआरटी एजेंट है। और ये सब भी और ये सब भी और ये सब भी सालाना 12 लाख के ज्यादा कमा रहे हैं। इन सबको भी रिन्यूअल कमीशन मिल रहा है। ये सबको भी यूएस जाने का लाइसेंस मिल रहा है। इन सबको भी गाड़ी खरीदने का मौका मिल रहा है। इन सभी को भी हेरिडेटरी कमीशन मिल रहा है। इन सभी को भी मकान का एडवांस मिल रहा है। इन सभी को भी हर साल 15,000 का पेंशन बढ़ता जा रहा है। ये सब भारत का हर कोने में से कितने सारे एजेंट आप देख रहे हैं गणेश जी, आप देख रहे, दिखाई दे रहा है? सही बात। सब के सब सचमुच के एजेंटों का नाम है। ये सब इतने सारे आपको क्या बताऊं गणेश जी, इतने हजारों, इतने। मैं आपको 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, 10-20 की बात नहीं कर रहा हूँ, 100-200 की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 1000-2000 लोग हमारे एलआईसी में कामयाब हुए ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ पिछले साल ही कितने लोग एजेंट बने एलआईसी के अंदर जो एमडीआरटी बने हैं। और ये नंबर जरा,
तो थोड़ा सा क्लियरिटी ये हो रहा है। 16 पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है सर। 16,511। बिल्कुल, पिछले साल ये सारे 16,511 लोग एमडीआरटी बने हैं, तो क्या आप नहीं बन सकते इतने काबिल आदमी? जरूर। तो मैं यही आपको सारे बेनिफिट मिलने वाली एजेंसी देने के लिए आया हूँ, क्यों ना आप एजेंट बन जाए। तो ये जो है दोस्तों गणेश जी, ये पहला 2 किट है। इसके सिवा हमारे पास और 10 किट है, ये एजेंटों को देने वाले किट, और उसके सिवा ये वाला प्रोफेशनल लोगों को समझाने की बातें अलग हैं, और यहाँ पर रिटायर्ड लोगों को समझाने वाली बातें अलग हैं, वहां पर दुकानदारों को, बिजनेसमैन को समझाने का किट और बातें अलग हैं, महिलाओं को समझाने वाली बातें अलग हैं, नौकरी करने वालों को समझाने वाले। इसमें क्या है कि एक होता है हेडिंग, दूसरा होता है इमोशन, तीसरा होता है इलस्ट्रेशन, और चौथा होता है समझाना। ऐसा 216 बेनिफिट्स ऑफ एजेंसी हम इसमें लोगों को समझ में आने वाली भाषा में पेश कर रहे हैं। एलआईसी एजेंसी की जो खूबियां हैं हम उसको बता रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सारे चीज है, ये सब मेरे को समझाना दिखाना मुमकिन नहीं होगा। एक में दिखाता हूँ। समझो गणेश जी, आप नौकरी कर रहे हैं, और ये नौकरी करने वालों को कैसा समझाना है उसका लिस्ट है। तो उसमें इतने सारे इलस्ट्रेशन जो है, उसमें से मैं आपको एक दिखा। तो गणेश जी आप देख रहे, ये जरा आंकड़ा पढ़िए। सर थोड़ा लिजिबिलिटी कम आ रहा है उधर नीचे। 1 मिलियन। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसा स्टार्ट हो रहा है। हाँ हाँ। 1 लाख से लेके 20 लाख है ये 1 साल से लेके 25 साल है। एक्स एक्सिस 1 लाख से 25 लाख है, ये 1 लाख से 20 लाख है। 1 साल से 25 साल। आप जब नौकरी करते हैं गणेश जी, आपका इनकम ऐसा बढ़ता है। शुरुआत में 40-50 हजार मिलता है, 4-5 साल के बाद वो 1.5 लाख लाख रुपए पर पहुंचता है, 7-8 साल के बाद वो 1.25 लाख पर, ऐसा बढ़ बढ़ के 25 साल कंप्लीट होते होते आप नौकरी करते वक्त बढ़िया सा काम किया, बहुत मेहनत किया, तो 2.5-3 लाख रुपए महीने पर पहुंचते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बात है। मगर जब आप एलआईसी एजेंसी करते हैं तो आपकी ग्रोथ ऐसा रहती है। शुरुआती 2-3 साल में नौकरी जैसा ही कम रह सकता है आपका उम्र, यहाँ पर जैसे जैसा बढ़ते जाएंगे इनकम ऐसा बढ़ता जाएगा, और 25 साल होने तक आपका मंथली इनकम 20 लाख पर पहुंच जाता है। तो आप गणेश जी बताइए, अपना 25 साल का करियर ये नंबर 1 है या नंबर 2? नंबर 1 जैसा बिताना चाहेंगे या नंबर 2 जैसा बिताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स सर, नंबर 2। बस पूरा हो गया, तो आप एजेंट बन जाइए मेरे साथ। तो ये एक इलस्ट्रेशन है, और ऐसा 72 इलस्ट्रेशन, 72 एक्सप्लेनेशन, 72 यू नो खूबसूरत खूबसूरत बातों के साथ ये किट बना है। तो ये पूरा की पूरा किट की खास बात है जो मैं आपको बताया। यहाँ से मैं सब्जेक्ट में जाना चाहता हूँ, वापस स्क्रीन की तरफ। आप जरा सा अनम्यूटेड ही रहिए, म्यूट मत करिए। तो इसमें अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए, नौकरी करने वाला, वुमेन वुमेन सभी के लिए अलग अलग लोग हैं, और इसमें आपको अलग स्ट्रेटेजी, अलग अप्रोच, अलग पूरे एजेंसी रिक्रूटमेंट को ना प्रोफेशनलाइज कर रहे हैं। आज तक डेवलपमेंट ऑफिसर को ऐसा रिक्रूट करने के मटेरियल कभी मिला नहीं है, स्क्रिप्ट कभी मिला नहीं है, अलग अलग लोगों को दिखाने के लिए कभी नहीं मिला। नतीजा, डेवलपमेंट ऑफिसर का नौकरी बहुत जबरदस्त और शानदार होने के बावजूद डेवलपमेंट ऑफिसर्स उसकी ऊंचाइयों को टच नहीं कर रहे। NFIWI के मेहरबानी से ये प्रोग्राम हम लोग आज आपके लिए किट बनाकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये करने पर आपको हर प्रकार के लोग, किसको मिलना है, कैसा मिलना है, कैसा समझाना है, हर चीज आपको हम ट्रेनिंग में बताएंगे। तो ये किट है दोस्तों, ये किट आपको हम देने वाले हैं, और आप ये किट लेने के बाद इसके अंदर 72 विजुअल, 72 एक्सप्लेनेशन, 72 इलस्ट्रेशन, कुल मिला के 216 तरीका, एजेंसी कैसे बाकी सब प्रोफेशन से बेहतर है, 216 तरीका इसमें बताया गया है। और ये करने के बाद आप एजेंसी की खूबियां, सुपीरियोरिटी एक मिशन गन के जैसा दिखाकर लोगों को कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो एक बार आपके पास ये मास्टर किट बोलते हैं हम लोग,
आपको मिल गया तो प्रोस्पेक्टिंग आसान हो जाता है, लोगों को मिलना आसान हो जाता है, एजेंसी समझाना आसान हो जाता है, आपका प्रेजेंटेशन मजबूत हो जाता है, लोगों को कन्विंस करना एफर्टलेस हो जाता है, लोगों को कहानी बोलना नेचुरल हो जाता है। रिक्रूटमेंट आपका वीकनेस नहीं है, रिक्रूटमेंट आपका स्ट्रेंथ बन जाता है। वो चाहे वो रमेश जी हो या आशीष जी हो या सुरेश जी हो या गणेश घोने साहब हो या रमेश कुमार पोद्दार हो या LM गोरमे साहब हो या कोई भी डेवलपमेंट ऑफिसर हो, हम सबके सब बहुत कामयाबी से आसानी से रिक्रूटमेंट में सक्षम हो जाएंगे। ये किट आपको मैं कुरियर से भेजने वाला हूँ, आप खरीदने पर, और उसके साथ साथ हमारा 25 दिन का ट्रेनिंग चलने वाला है। ये 25 दिन का ट्रेनिंग जो है 9 मई को स्टार्ट होगा। आज ट्यूसडे है, अगला ट्यूसडे को ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा और ये पूरा ट्रेनिंग आपको NFI FWI चैनल में पूरा ट्रेनिंग आपको लाइव मिलेगा, राइट। यानी ये पूरा ट्रेनिंग आपको रिकॉर्डेड कभी भी दोबारा देख सकते हैं। 25 दिन का ट्रेनिंग होगा, हर दिन सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक 25 दिन का ये ट्रेनिंग चलेगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 25 दिन के ट्रेनिंग में पहला दिन का कंटेंट ये सब होगा, आप देख सकते हैं। दूसरा दिन का कंटेंट ये है, तीसरा दिन का ये है, चौथा दिन का ये है, कैसा फिक्स करना अपॉइंटमेंट, किसको जाके मिलना, क्या समझाना, कैसे अपॉइंटमेंट लेना, किसको मिलना, कहाँ पर मिलना, कैसे समझाना, कैसे क्लोज करना। ऐसा पूरा 25 दिन ना सिर्फ मैं आपको क्लासरूम ट्रेनिंग में सिखाऊंगा, बल्कि इनमें से कुछ दिन मैं खुद फील्ड में जाकर आप लोगों की आंखों के सामने लोगों को मिलकर एजेंसी के लिए कन्वर्स कर रिक्रूट करके दिखाऊंगा। ये 25 दिन का ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है और ये रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए आपको NFFW एजुकेशनल सीरीज चैनल में आपको यूट्यूब में मिलेगा। ये पूरा ट्रेनिंग आपके लिए फ्री है, इसके लिए कुछ भी देने का नहीं है, राइट। तो एक ही चीज आपको आज खरीदना पड़ेगा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए। ये 20वां दिन, ये 21वां दिन, ये 22, 23, पूरे 25 दिन का कंटेंट है। 25वां दिन ये हो गया। ये जो किट है, इसके अंदर पूरे 12 सेक्शंस होते हैं। महिलाओं के लिए एक सेक्शन हो गया, बिजनेसमैन के लिए एक सेक्शन हो गया, रिटायर्ड पीपल के लिए एक सेक्शन हो गया, प्रोफेशनल के लिए एक सेक्शन हो गया, कपल पति पत्नी के लिए एक सेक्शन हो गया, हर प्रकार के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए, आपत्ति खारिज के लिए एक सेक्शन हो गया, भविष्य में कितना प्रॉफिट हो सकता है एजेंसी का फ्यूचर के बारे में एक सेक्शन हो गया, कपल्स के लिए एक सेक्शन हो गया, और उसके सिवा लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन हो गया, और उसके सिवा नौकरी करने वालों के लिए ये एक सेक्शन हो गया, 10 हो गया, और MDRT का लिस्ट जो 16,500 ये एक हो गया, और मेन जो MDRT की आपको हर कस्टमर को मिलते वक्त स्टार्टिंग में दिखाना है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ये टोटल 12 सेक्शन हो गया। ये पूरे 12 इस किट के अंदर आते हैं। और यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण सवाल मुझे पूछना है जो आपके दिमाग में आता है, गणेश घोने जी, वो कौन सा है? अनम्यूट करिए, पहले आपने म्यूट कर लिया। हाँ हाँ, बोलिए सर। ये किट देखने के बाद जो सवाल आपके मन में आता है ये लेने के लिए, वो सवाल क्या है? प्राइस, इसका प्राइस क्या रहेगा? इसका प्राइस क्या है? तो ये खरीदने के बाद अगले दिन यानी कल दोपहर को 5 बजे हमारे यहाँ से कुरियर से निकल जाएगा, आपको पहुंच जाएगा। 7 दिन के अंदर पहुंचने पर आप 9 तारीख से किट का इस्तेमाल करते हुए ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। इसमें सारा 12 सेक्शन आ गए। अब आपने पूछा प्राइस क्या है? इस प्राइस एक्चुअली जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां खरीदते हैं तो लाख रुपए देते हैं, मगर NFFWI के साथ हमारा टाई अप होने की वजह से, श्री विवेक सिंह जी और विनय बाबू साहब के साथ हमारा बातचीत होने की वजह से आज डेवलपमेंट ऑफिसरों को हम सिर्फ 6,000 रुपए में दे रहे हैं। तो पूरा किट आपको 6,000 में पड़ेगा। 6,000 में आपको किट मिल रहा है, और 6,000 में आपको ये इंग्लिश में भी है किट और हिंदी में भी है। पूरा 6,000 में किट भी और 25 दिन का ट्रेनिंग भी ये आपको मिल रहा है। अब अगला जो सवाल आता है, रजिस्टर कैसा करेंगे, किट में कैसा खरीद सकता हूँ? उसके लिए आपको जाना है मेरे वेबसाइट rajestagore.com में। वहां पर जाके तुरंत पेमेंट करके, उसमें पेमेंट करने से पहले आपका नाम लिखना पड़ता है, आपका एड्रेस लिखना पड़ता है, और उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो है उसमें से आप पेमेंट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि आप हमको एक व्हाट्सएप कर सकते हैं कि काइंडली सेंड पेमेंट लिंक। बोलने पर मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है
9820157787। सब लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप तुरंत इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हैं, सिर्फ 6,000। और ये 6,000 के लिए सिर्फ 2 दिन तक है। उसके बाद वापस, ये पिछले 2 साल पहले ये 10,000 में हमने किट दिया था। और आप में से काफी सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो 10,000 में खरीद के 40, 50, 100, 200 एजेंट बनाए हैं। या उन लोगों को मैं हो सके तो मौका मिले तो मैं उनसे अनम्यूट करने का कोशिश करूंगा। राइट, तो ये हमारी नंबर है जिसमें आपको व्हाट्सएप करने पर एक मिलेगा। आप अगर जीपे या फोन पे करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 9324223757। ये नंबर सिर्फ पेमेंट करने के लिए, लाल वाला जो नंबर है ये जीपे या फोन पे करने के लिए है। और नीचे जो है वो पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है। वो स्क्रीनशॉट में यूपीआई नंबर दिखना जरूरी है। उस यूपीआई नंबर को वापस आप अगर ये 98201 नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं तो आपको हम एक फॉर्म भेजेंगे। वो फॉर्म में आप एड्रेस भर सकते हैं, जिस एड्रेस पे हम आपको कल ये किट रवाना करेंगे। ये जो ऑफर है 6,000 का, सिर्फ एक दिन के लिए है। और ये हमारी क्या बोलते हैं, अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो तो ये अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो आज और कल तक ये 6,000 है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप तुरंत इसका पेमेंट कर सकते हैं ऑलरेडी। हाँ जी, बहुत सारे लोग इसमें पेमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को। हाँ जी, गौरी शंकर ने ऑलरेडी पेमेंट कर लिया है। मैं बता, शिरीष, हाँ जी शिरीष जी कॉन्ग्रेचुलेशन आपने। अप्पा जी पेमेंट कर लिया। प्रकाश चंद्र पेमेंट कर लिया अभी अभी। इम्तियाज यूनस, क्या बात है, मैं यहाँ पर से बता रहा हूँ और वहां से आपने जीपे कर दिया। ये जीपे नंबर है। यस 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 यस, तो विकास रतन, ये अभी आपने पेमेंट किया, बहुत खूब। सतीश पुंडलीकर, हाँ जी, ये अभी अभी आपने। मल्लेश बंडी, राइट, और भी लोग आप इसको तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। यस, तो दैट इज इट। तो आप में से किसी को कुछ भी सवाल पूछना है तो इमीडिएटली मेरे को पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के सभी को अनम्यूट करने का मौका देता हूँ। एक आदमी एक साथ में पूछिए। सब लोग एक बार अनम्यूट करेंगे तो दिक्कत होगा। कोई, हाँ जी, आप में से जिस किसी को, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ टेगोर साहब, आपने ये जो रिक्रूटमेंट के बारे में बताया है, हाँ जी, तो ये अर्बन एरिया के, रूरल एरिया के लिए कोई ऐसी टिप्स बताइए ना। ये पूरा के पूरा अर्बन के लिए काम आएगा, रूरल के लिए काम आएगा, सभी के लिए काम आएगा। आप जहां कहीं के हैं वहां पर जाकर रिक्रूट कर सकते हैं। ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में ले सकते हैं, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में ले सकते हैं। बहुत सारे, अभी हमारा राजेंद्र इथापे साहब बोल के एक बैठे हैं यहाँ पर, मैं आज देख रहा था अभी अभी, वो एकदम डीप रूरल इस्लामपुर बोल के जगह के हैं। और पिछले साल उन्होंने किट खरीदा था, उन्होंने बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया। और आप में से कोई भी है जो इन्होंने पिछले साल खरीदे थे, वो आप इसमें से आपका एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अपनी ऑफ है ना। बहुत सारे लोगों ने अनम्यूट कर लिया। हाँ जी, और किसी को? हाँ जी, अमर मुखर्जी बोलिए। किसी एचएनआई को अगर हम रिक्रूट करना चाहें, एचएनआई के लिए वो तो एमडीआरटी का आपने कहा, वो सही बात है, लेकिन एचएनआई के लिए कुछ और पॉइंट्स अगर हो तो आप बताएं। एचएनआई के लिए बहुत ही खूबसूरत बात आपने पूछा है जी। तो ये जो किट है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि 4 प्रकार के एजेंसी है। आप देख सकते हैं, एमडीआरटी, नॉर्मल, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी। तो एचएनआई है तो आप टीओटी एजेंसी कैनवास करेंगे, राइट ना। वहां पर टीओटी भी है, एमडीआरटी भी है, मिनिमम एमडीआरटी बोल रहे हैं, टीओटी भी है। नॉर्मल एजेंट को भी आप रिक्रूट कर सकते हैं। ये एमडीआरटी का बहाना करके आप लोगों को नॉर्मल तरीके से रिक्रूट करेंगे और एमडीआरटी बनने का रास्ता दिखाएंगे। अमर मुखर्जी, आपको समझ में आया? थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और ये जो आप इसमें ये भी है, इसके अंदर एक और भी चीज दिखा दो। बढ़िया सवाल पूछते हैं आप। एक इलस्ट्रेशन है यहाँ पर, ये नॉर्मल एजेंसी, ये एमडीआरटी एजेंसी, ये सीओटी एजेंसी, ये टीओटी एजेंसी, ऐसा इलस्ट्रेशन बना के बता रहे हैं। और ये देखते देखते एचएनआई लोग एजेंट बनते हैं। राकेश दीक्षित जी बोलिए। हाँ, मैंने प्रश्न यही पूछा था सर कि रूरल एरिया का कोई टिप्स दीजिए ना आप सब। सर, ये किट पूरा के पूरा रूरल के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना अर्बन के लिए है। रूरल के लिए अलग कुछ नहीं, सेम टू सेम चीज है सर। तो आपको जब मैं ट्रेनिंग दूंगा, आप देखेंगे कि मैं डीप रूरल के गांव में जाकर रिक्रूट करूंगा।
कम से कम 2 दिन मैं डीप रूरल में जाऊंगा, 6 दिन कम से कम सिटी में रह के मैं रिक्रूट करूंगा। ओके, तो जो प्रशिक्षण चलेगा 9 मई को स्टार्ट हो रहा है, 10 जून को स्टार्ट। पवन बोल रहे हैं इट इज वेरी कॉस्टली किट। नहीं सर, ये कॉस्टली नहीं है, आज की तारीख में बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। 2 साल पहले लोगों ने इसको 10,000 12,000 दे के खरीदे, प्राइवेट कंपनी वाले 72,000 से लाख रुपए दे के खरीदे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप भुवनेश्वर वाले बताइए। हेलो सर। हाँ जी, सर हाँ जी, बोलिए। जो सतीश गाजबे साहब, आपका पेमेंट आ गया। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैं बोलिए 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 बोलिए। सर मैं जो आपको पहले सवाल किए थे, वो जो जब एजेंसी कानभासिंग के लिए जाते हैं तब लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। वो इस प्रोफेशन को बहुत मीन मानते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम डेली इतने लोगों को पास जाना हमको अच्छा नहीं लगेगा। इससे हाँ जी, बेहतर है कहीं लोग पे क्या करते हैं जाकर। सर? आपका नाम फिर से बताइए, नाम बताइए। सर नाम मेरा आशीष कुमार मानती है, मैं निमापड़ा आशीष ब्रांच मानती, हम डिवीजन। क्या करते हैं, हम नॉर्मल एजेंट रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और 2 बातें हैं, इसको बोलते हैं ना 2 चैलेंजेस है। चैलेंज नंबर 1 है, इसको हम कहते हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ एजेंसी। आपका सवाल क्रेडिबिलिटी ऑफ एजेंसी के लिए। क्रेडिबिलिटी ऑफ एजेंसी में नॉर्मल एजेंसी के बात करने की जगह पर आप अगर एमडीआरटी एजेंसी का नाम लेके दिखाएंगे, ये मटेरियल दिखाएंगे, वो सवाल खत्म हो जाएगा मोहंती साहब। दूसरी बात है क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। एक क्रेडिबिलिटी ऑफ एजेंसी है, दूसरा क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल है। क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल यानी आपकी मोहंती साहब की खुद की क्रेडिबिलिटी, और इसको ध्यान में रखते हुए आपको वो क्रेडिबिलिटी के लिए ये प्रोग्राम में बहुत सारे बातें सिखाया जाएगा, जैसे सूट पहन के जाना, जो बोलना है उसको अभ्यास करके जाना, वगैरह वगैरह। या नितिन बामरे साहब, आप पेमेंट सेंड बोल रहे हैं, मैं देख के बता रहा हूँ। अजय रॉय, आपका पेमेंट अभी अभी मिल गया। उत्कर्ष आर्या, आपका पेमेंट मिल गया। नीलेश राजाराम, पेमेंट मिल गया। धवल कुमार राम, आपका पेमेंट मिल गया। सतीश कुमार पुंडलीकर, आपका पेमेंट मिल गया। मल्लेश बंदी, आपका पेमेंट मिल गया। अखिलेश शुक्ला, पेमेंट मिल गया। गोरला अप्पाराव, पेमेंट मिल गया। स्वप्निल हेमराज, पेमेंट मिल गया, है ना। या इतने सारे लोगों को मैं और भी बता रहा हूँ। कामले उबनारे, आपका मिल गया। गौरीश कृष्णा, आपका पेमेंट मिल गया। जसविंदर सिंह का भी पेमेंट मिल गया। और मैं ये सब जो शिरीष अरुणचल, हाँ ये आपका मिल गया। यस, इतने सारे लोग जो है जीपे में किए हैं, उसके सिवा जो लोग वेबसाइट में किए हैं उनका मैं बताने पर। दीपक कुमार, आपका अभी अभी मिल रहा है जीपे में से। यस, तो बाकी जो जीपे में नहीं है मैं यहाँ से नहीं बता पाऊंगा। तो आप, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों ने जो खरीद लिया। बाकी लोग भी तुरंत पेमेंट कर लीजिए आज के आज। और ये सब जो मतलब नहीं, किट इज एक्सपेंसिव, किट इज एक्सपेंसिव। मुंबई से मीटिंग हो रहा है, सेंट्रल ऑफिस, वही बोल रहा है। हाँ जी, थैंक यू। सस्ता चीज में रिजल्ट नहीं आता है। महेश्वर गौड़ा, आपका अभी अभी पेमेंट मिल गया। यस, राकेश दीक्षित, आपका हो गया। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये ओप्पो वाले बार बार बोल रहे किट इज एक्सपेंसिव, तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। सस्ता चीज में होना नहीं चाहिए, राइट। अच्छा चीज आपके पास अच्छा कीमत में मिलता है, धन्यवाद। और 2 दिन के बाद ये वापस 10,000 हो जाएगा। सर, शुड यू प्रोवाइड पीडीएफ NFIFW पोर्टल? नहीं, ये पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, मगर पूरा ट्रेनिंग NFIFWI के पोर्टल में रहेगा। वीरेंद्र सिंह तोमर, आपको सवाल पूछना है? नहीं सर, हम आपका पूरा बात सुने, एक्सीलेंट प्रोग्राम। धन्यवाद। हाँ जी, राजेंद्र इथापे, आप हो क्या लाइन में? ओके, और कोई जो पिछले आरडी इथापे, आप अगर लाइन में आ सकते हैं। आप अगर लाइन में आ सकते हैं, क्योंकि मैं इतने लोगों में ना अकेले आपको देख रहा हूँ जो पहले किट खरीद चुके हैं। तो आप अगर अपना अनुभव बता सकते हैं तो इट वुड बी ग्रेट बेनिफिट फॉर। ये एसएस बोल के हैं, वो भी बताना चाहते हैं। तो राजेंद्र, आप पहले बता दीजिए, आप अगर वीडियो ऑन करके बात कर सकते हैं। थैंक यू राजेंद्र, ग्रेट इवनिंग। ग्रेट इवनिंग। राजेश टागोर जी ने ये रिक्रूटमेंट का किट बनाया है,
कोई पूछ रहे थे कि ग्रामीण एरिया के लिए कैसा रहता है, तो ये ग्रामीण एरिया में भी वैसा ही काम करता है जैसा अर्बन में कर सकता है। इसमें जो भी 12 डिफरेंट सेक्शंस दिए हैं, तो हर एक सेक्शन के लोग ग्रामीण एरिया में भी रहते हैं, और विथ डेमो हम जब दिखाते हैं तो उनके लिए देखने के लिए ऑडियो विजुअल इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है। ये किट का अगर आप साइज देखते हो तो साइज एक विजुअल इफेक्ट उसका है, एक छोटा सा पम्पलेट नहीं है, एक अच्छा सा टीवी स्क्रीन इतना, लैपटॉप की स्क्रीन इतना बड़ा वो किट है, और उसके लिए जो फोटोज यूज किए हैं, मटेरियल यूज किए हैं, उसका स्टैंडर्ड भी बहुत अलग है। ये किट लेकर जाने के बाद हम जो आम एजेंसी रिक्रूट करने के वास्ते जाते हैं तो सिर्फ खाली बात करते हैं, उसके समझ में आता है नहीं आता है हमें कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन जब वो देखता है तो उसके साथ वो कुछ सवाल भी पूछता है, और जब सवाल पूछता है तो वो हमारे डिस्कशन में इन्वॉल्व होता है, और डिस्कशन में इन्वॉल्व होता है तो हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मौका मिलता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मौका मिलता है तो क्लोजिंग की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती है। इसी तरह से हमने अच्छा इसका इस्तेमाल किया, और हमें कुछ अच्छे एजेंट भी इसके जरिए मिले, अच्छा काम भी होता है इसके जरिए। तो हमारा एक्सपीरियंस तो इसके साथ बहुत अच्छा रहा। और ये राजेश का एक खासियत ऐसा है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग मटेरियल नहीं प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल के साथ वो हमें ट्रेनिंग भी देते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसा करना है। वो ये किट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो भी है कि वो ट्रेनिंग मटेरियल सही तरीके से कैसा यूज करना है, उसका भी ट्रेनिंग वो कर रहे हैं। नेशनल फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे वो हमें 25 दिन का फ्री ट्रेनिंग दे रहा है, तो ये बहुत बढ़िया बात है, इसके लिए मैं उनको बहुत सारे धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू राजेश। थैंक यू सो मच राजेंद्र थापे साहब। यस, और भी कोई एक बात करना चाह रहे थे, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं जिन्होंने भी अभी हाथ उठाया। यस, और किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट। अगला 24 घंटा नहीं 48। हाँ जी, हाँ जी, यस, आप बात करिए सर, आपको अनम्यूट किया हुआ। विजय कुमार बोल रहा हूँ सर। विजय कुमार बोलिए। सर पेमेंट कर दिया था, हिंदी किट का रिसीव आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया सर। हिंदी किट का आपने वेबसाइट में पेमेंट किया? नहीं सर, जीपे से किया हुआ है। तो जीपे से करने के बाद ना आपको वो स्क्रीनशॉट हमको भेजना है दूसरे नंबर आपके व्हाट्सएप जी भेजा है, व्हाट्सएप पे भेजा इस है। नंबर पे मत भेजिए जिसमें किया है, ये ऊपर के नंबर में पेमेंट करना है, और नीचे के नंबर में स्क्रीन पे भेजना है स्क्रीनशॉट। जब आप सर यही किया है कि व्हाट्सएप नंबर पे जो आपका नंबर है, हाँ जी, स्क्रीनशॉट दोनों पे व्हाट्सएप नंबर है, मगर ये जो है पेमेंट का नंबर है, नीचे ब्लैक वाला व्हाट्सएप का नंबर है। तो जब आप ये स्क्रीनशॉट भेजते हैं, हमको बहुत सारे पेमेंट आते हैं तो टैली करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट में वो यूपीआई आईडी होना चाहिए, यूपीआई मैंने आईडी भेज दिया, अपना यूपीआई आईडी के साथ भेज दिया पूरा स्क्रीनशॉट। ये 201 नीचे वाले में भेजा सर आपने? सर भेजा जो मैंने इसमें भेजा 877787 वाले पे। बहुत बढ़िया किया। अब जो है इसको आपको अगले कल सुबह तक आपको एक फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म। ओके ओके। वो फॉर्म आपको भरने पर हमको एड्रेस आ जाएगा, वो फॉर्म आप वहां पर भरेंगे, हमको एड्रेस इधर आ जाएगा। हेलो, हाँ जी, ये सिस्टम होगा। हाँ जी, बनारसी यादव साहब। हेलो। यस सर। हाँ जी, बनारसी नमस्कार यादव सर। साहब बोलिए। हाँ हाँ सर, नमस्कार सर। जो एमके ट्रेनिंग पाटिल साहब होगी, 2 मिनट के बाद बात करेंगे। ओके ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, बनारसी यादव साहब बोलिए। हाँ सर। हेलो सर। ट्रेनिंग होगी आपकी, उसका चार्ज अलग से होगा? नहीं, ट्रेनिंग का चार्ज फ्री है सर, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ये NFFW प्लेटफॉर्म पर आपको सेम टू सेम जगह मिलेगा यूट्यूब में। हाँ जी, बनारसी यादव साहब समझ। हाँ जी, हाँ हाँ सर, समझ गया सर। एमके पाटिल साहब बोलिए। सर अभी भी मैंने पेमेंट तो किया, अभी आपका स्क्रीनशॉट भी भेजा है। हाँ, मुझे तो इंग्लिश का ये चाहिए। आपने ये ट्रेनिंग के बारे में बताया ना, 9 तारीख से चालू होता है करके, वो दोनों लैंग्वेज में रहता है क्या है सर? वो दोनों ट्रेनिंग जो है हिंदी में होगा, एक ही लैंग्वेज में होगा, सुबह 7:30 to 9 रहेगा। मगर इंग्लिश में आप अगर चाहते हो तो मेरे पास 25 दिन का इंग्लिश ट्रेनिंग है, वो पूरा आपको लिंक भेज दूंगा मैं। जो भी लोग इंग्लिश में चाहते हैं उनको इंग्लिश भेज दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के अश्विन साहब जरा म्यूट करके रखिए, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश का चाहिए, इसलिए मैं आपको। तो इंग्लिश भी मिल जाएगा, इंग्लिश के साथ आपको ट्रेनिंग का पूरा लिंक मिल जाएगा। अश्विन साहब जरा म्यूट करेंगे प्लीज। कोई आप मुझे फॉर्म गिरो कल भेजेगा ना? कल तक फॉर्म भेजूंगा व्हाट्सएप में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये अश्विन साहब, आपका ना बच्चों का आवाज आ रहा है।
मैं अश्विन को म्यूट I have shared the screenshot of the payment to that number. kindly share it on 9820157787. Yeah, that I already saved and I have sent. Yes sir, thank you so much. Fine. हेलो हाँ जी बोलिए। सर, इंग्लिश वाला चाहिए था तो हाँ जी, फॉर्म में आएगा क्या वो? हाँ वो फॉर्म में ना कौन सा लैंग्वेज चाहिए बोल के एक नाम रहेगा, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ कौन सा लैंग्वेज चाहिए आप लिखेंगे तो उस लैंग्वेज में आएगा। आपको कल सुबह तक फॉर्म मिलेगा, आपके जीपे नंबर, सॉरी व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। नीलेश जी कांग्रेचुलेशंस, आपने पेमेंट कर लिया। सर आपने वो इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश ट्रेनिंग के बारे में बोला ना, वो इंग्लिश का लिंक का वो भी 25 दिन का रहता है क्या है सर वो लिंक? हाँ जी, वो भी पूरा 25 दिन का ट्रेनिंग जो है, ये प्रोग्राम अभी जो होगा तीसरी बार होगा, पहले 2 बार हो चुका है। वो 2 बार का पूरा रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है, वो इंग्लिश वालों को रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ये प्रोग्राम में क्या है, हम लोग सुबह 7:30 को स्टार्ट करेंगे ना, तो कुछ दिन 7:30 से 8 बजे तक क्लास के बाद 1 घंटा मैं फील्ड वर्क करूंगा। और फील्ड वर्क में मैं बहाकर लोगों को रोड पे मिलकर, अलग अलग डीओ के साथ मिलकर, रोड पर मिलकर रिक्रूट करूंगा। वो रिक्रूटमेंट इंग्लिश में पॉसिबल नहीं होगा। सब लोग ना यहाँ पर बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, गुजरात में हिंदी में बात करना चाहेंगे, हिंदी में हो पाएगा, इसलिए ट्रेनिंग भी हिंदी में हो रहा है। एम के पाटिल साहब, ओके ओके सर, ओके। अगर आपको मैं ट्रेनिंग इंग्लिश का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे तो क्या ऐसा 10-12 दिन ऐसा ये अटेंड करके बाद में तो इंग्लिश का लिंक का वो भी यूज कर सकते हैं ना। बराबर है, क्योंकि वो 9 तारीख से वो 25 दिन कंटिन्यूअस नहीं होता है वो अटेंड करने का, थोड़ा दूसरा ये भी है टाइमिंग वो। ये हिंदी में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगा। ट्रेनिंग पूरा फ्री है सर, 25 दिन का। ओके ओके। एंड ये ट्रेनिंग क्या है, पूरा मटेरियल बेस्ड है, ये दिखाकर बोलेंगे तभी हो पाएगा। और ये किट जो है अगले 2 दिन तक ही आपको 6,000 में मिल रहा है, वापस परसों से 10,000 हो जाएगा। तो आज अभी आप पेमेंट कर लीजिए। यस, थैंक यू सर, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। आनंद आप बोलिए प्लीज। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि ये ट्रेनिंग जो होगा ये रिकॉर्डेड होगा या लाइव होगा? लाइव होगा। लाइव। इंग्लिश में चाहते हैं तो रिकॉर्डेड मिलेगा, हिंदी प्रोग्राम लाइव होगा। 9-10 मतलब हफ्ते में 5 दिन, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सुबह 7:30 बजे स्टार्ट होगा और 9 बजे खत्म होगा। और ये ट्रेनिंग अटेंड करने का 2 तरीका, आप एक NFFW चैनल में यूट्यूब में देख सकते हैं, या तो आप जूम में अटेंड कर सकते हैं। आप अगर जूम में अटेंड करना है तो आपको सूट पहन के, टाई पहन के अटेंड करना कंपलसरी होगा। आनंद साहब, NFFW आप अगर यूट्यूब में रहेंगे तो आप कैसे भी अटेंड कर सकते हैं। जो लोग सूट नहीं पहनेंगे, टाई नहीं पहनेंगे, उन लोगों को हम लोग जूम में अलाउ नहीं करेंगे। ये जो हमारा प्राथमिकता रूल है, राइट, दोनों जगह पर अवेलेबल हो। हेलो, हाँ जी, विवो साहब बोलिए। विनय सिंधे बोल रहा हूँ सर। हेलो, हाँ सिंधे साहब बोलिए। हाँ सर, मैंने पेमेंट कर दिया है, कांग्रेचुलेशन। स्क्रीनशॉट भेज दिया हूँ। हाँ जी, मुझे हिंदी में चाहिए सर, हिंदी में। हाँ जी, मैं जब आपको लिंक भेजूंगा इसका व्हाट्सएप का, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि उसमें हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन रहेगा। ठीक है सर। गिरीश पिंगे साहब, आपका मोबाइल नंबर में लेके यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको जो अगर मोबाइल नंबर व्हाट्सएप करिए, ये नीचे वाले नंबर पे, ये मेरा जीपे नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी में भेजा हूँ सर, धन्यवाद। इसी नंबर पे भेजा हूँ। हाँ जी, वो एक बार देख लीजिए स्क्रीनशॉट जो भेज रहे हैं उसमें यूपीआई आईडी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ भेजा ना, यूपीआई आईडी दिख रहा है। बहुत बढ़िया सर, कांग्रेचुलेशंस। ओके, थैंक यू। हाँ जी, बहुत सारे लोगों का मेरे को यहाँ पर पेमेंट मिल रहा है, राइट। मैं जरा सा बताना चाहता हूँ, कुछ लोग जिनको राजेंद्र कोका साहब एनी फील्ड ट्रेनिंग बोल के पूछ रहे हैं, ये यूट्यूब में पूछ रहे हैं। राजेंद्र कोका साहब, ये फील्ड ट्रेनिंग रहेगा। मैं बहुत सारा दिन में फील्ड में खुद जाकर आपको रिक्रूट करना सिखाऊंगा, आप चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं फील्ड में। चिंटू साहब, ये बुक कैसे मिलेगा? ये व्हाट्सएप पर मेरा वेबसाइट में जाकर rajeshtago.com में खरीद सकते हैं, या जीपे में पेमेंट करके कर सकते हैं। शेखर पुजारी साहब, आपका भी एक मिनट। शेखर पुजारी, विजय रावत, आपका पेमेंट मिल गया ऐसा लग रहा है। एंड हाँ, श्री श्रॉफ साहब, आपका भी पेमेंट मिल गया हमको। यस, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना हम लोग ये प्रोग्राम को अभी 1 मिनट बाकी है, 9:45 को कंक्लूड करना था। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था साइट के थ्रू। हाँ जी, राजीव रंजन कुमार, तो वो जो है आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भेजने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पेमेंट में आपने एड्रेस भी लिख दिया है? जी जी, लिख दिया सर। बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस राजीव रंजन कुमार जी।
ये कल तक आपको किट यहाँ से भेज दिया जाएगा, 1 हफ्ते में मिल जाएगा। यश जैन साहब बोलिए। थैंक यू सर। महेश दोनों मिल सकती है क्या, वाइकर, हिंदी आपका और पेमेंट इंग्लिश? मिल गया। 1 मिनट, महेश महादेव वाइकर साहब, आपका पेमेंट मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, यश जैन बोलिए। सर दोनों अगर चाहिए, हिंदी और इंग्लिश किट दोनों चाहिए, तो कई लोगों क्या रूरल बेल्ट है, हिंदी भी चलती है, और हाँ कई जी, लोगों को इंग्लिश में भी, जैसे यंग लोग रहते हैं तो उनको इंग्लिश में भी अच्छा रहता है, मतलब समझाने में। हाँ जी, तो दोनों के तो दोनों आप 6-6 हजार में खरीद लीजिए। आज आपको दोनों 6 हजार में मिल जाएगा, तो 12 हजार आप पेमेंट कर लीजिए, नहीं तो 6-6 हजार 2 बार कर लीजिए। ये कोई ओप्पो वाले हैं। देखिए सर, ओके मैंने सर, ना ओके। डेवलपमेंट ऑफिसरों का यूनियन की फेडरेशन प्लेटफॉर्म में आके बात कर रहा हूँ। मैं फेडरेशन के साथ करीबन 23 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारा काम हमने किया है। तो अलग अलग भाव नहीं लेते, सभी का एक ही कीमत है 6 हजार रुपया। आप बार बार उसमें कम करिए लिखे, ऐसा नहीं होता। थैंक यू सो मच, दोबारा ऐसा मत बोलिए। आपको खरीदना है तो 6 हजार में खरीद सकते हैं, और मैं ट्रेनिंग पूरी। और कोई है सवाल पूछने वाले? दोस्तों, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है। ये सर किट है। सर सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वीरेंद्र तोमर बोलिए। हाँ, हम आपको इसलिए बधाई देंगे कि हमें भी 1 साल बचा है रिटायरमेंट का। बधाई हो। और हम साल भर बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। हमारा आपके प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को मैसेज है, इसको अडॉप्ट करें। क्या है ना, रिक्रूटमेंट इज द मेन प्रोसेस ऑफ द योर जॉब। आपकी नौकरी के लिए आपका रिक्रूटमेंट एजेंट का करना बहुत जरूरी है। तो आपका जो प्रोग्राम मैं देखा हूँ वो इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं ऐसा लग रहा है कि मैं रिटायर्ड क्यों हो रहा हूँ। अब हमारा 1 साल बचा हमारा। सर 1 साल में भी बहुत कमाल कर सकते हैं। नहीं, फिर भी करेंगे सर, हम Yes. करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। अभी हम सेंट्रल जोन में हम बढ़िया काम करते हैं इंदौर में। हाँ जी, तो ठीक है सर, आपको बेस्ट विशेष, और बच्चों को हम शिक्षा देंगे कि यार ये प्रोग्राम को ज्वाइन करें, और वाकई में कि रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है, ये ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। नए बच्चे जो आए ना, नए वाले, उनको उनको हम शिक्षा देंगे, बिल्कुल एज ए सही लीडर सर, हम बोलेंगे उनको, एज ए लीडर धन्यवाद बोलेंगे। एवरीबॉडी। थैंक यू, 9:45 से 2 मिनट ज्यादा हो गया। थैंक यू, ओके, यस, थैंक यू सो मच। यस थैंक यू, एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम में जुड़े और ये प्रोग्राम को सुने। राजेंद्र इथापे साहब, थैंक यू। एंड फिर से एक बार NFFWI फेडरेशन की टॉप लीडरशिप को मैं धन्यवाद देता हूँ। सेक्रेटरी जनरल श्री विवेक सिंह जी एंड प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री विनय जी, सबको धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय। एक्सीलेंट, थैंक यू।